Yeah, hi, good afternoon, everybody. Must I inform you that lordships are about to come in the hall? I request all of you, as a customary of the function, that when the lordships are there, I will request that you please keep your phones on silent or out of range mode. Thank you. Mic testing one, two, three. I hope I'm audible to the last person standing in the sitting in the hall. I hope I'm audible to everybody. Can I have a affirmation from the person sitting in the end? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? Somebody in the end. Thank you.
The lordships and dignitaries are just about to enter the hall. Please be informed, lordships and the dignitaries have arrived in the hall. May I request you to please all rise in the honor of our lordships and dignitaries. Huh. May I request the lordships to please come on the dais? May I request? Yep. May I request lordships to please come on the dais? Thank you, lordships. Yes. Thank you very much, lordships. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good afternoon, lordships, dignitaries, and all present in the hall. At the outset, I want to really thank you for coming over here and taking out time from your busy schedules. And also, I am beholden by the gratitude of our lordships and important dignitaries that they arrived on this day to this land of Nathdwara of Rajasthan in Rajasthan. Those who could not be a witness to what had happened today in morning at Peplantri village, it becomes my duty to inform you all. I must tell you, it was a great day for all of us. We witnessed, which was something remarkable and memorable. And here goes the itinerary that we had done over there. The dignitaries were facilitated by the Gram Panchayat office bearers, Srimati Anita Paliwal, Sarpanch, and Mr. Shamsundar Paliwal, the former Sarpanch of Piplantri village. And the dignitaries, while coming on the dais, they also did plantation, which was a beautiful, sight to watch. And then we had an address by Honorable Mr. Judge Sandeep Mehta, Judge Supreme Court of India, which was followed by a memorable address of State Minister Honorable Mr. Arjun Ram Meghwal, Law and then we were witness to the inauguration of RALSA Van Sanrakshan Balika Sashактikaran Vidik Chetna Shivar. It was a shiver in which various schemes run by government were, though the participants of it were felicitated in it. It was followed by an inspirational address by Honorable Mr. Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman NALSA. And the last, we had RALSA One Balika Varsh 2025, Srijan Ki Suraksha. The scheme was launched. I would like to take a moment or two to describe what was that event, what was that scheme. Recognizing the intrinsic link between the well being of nature, revered as mother of all beings, and women worshipped as Matra Shakti, and acknowledging the disadvantaged position both face in the contemporary society, the Rajasthan State Legal Services Authority, RSLSA, as we call it, hereby launched a scheme for ecofeminism, Srijan Ki Suraksha,
2025, which was inspired by the Village Piplantri model of development. The scheme is aimed to empower women and protect the environment through a collaborative and community centric approach, leveraging the existing legal services framework. The mission of the scheme is as here. It is to implement a pilot project in selected Gram Panchayats across 36 DSLAs in Rajasthan, wherein they will be adopting a particular panchayat, and all the girl children born there in a village will be under the tutelage of DLSAs, wherein and then in that all the state related benefits and they the girl children will be protected from the poxos and from other kind of offenses which they have to sometimes bear in in this country. The pilot project, upon the successful completion, will be extrapolated and applied across the state. As I told you, the objective, the states of the projects were. Now, the process will be it's very simple, in which the awareness and education of about the schemes that will be done over here. There will be green initiatives and plantation drive across, in which, upon the birth of every girl child in a particular panchayat that has been adopted, 11 trees, 11 saplings will be planted, much to like what has been done by Shri Samsundar Paliwal in Piplanti. After that, there will be these girls will also be given the unique identity card. The card will have a name and date of birth of the child, the name of the panchayat, the unique identification number to identify, and the helpline number of NALSA and RALSA and DLSAs. Basic information about legal aid services will also be given in it. The whole idea about the scheme is to connect with panchayats and the girl child born there in panchayats, so that they are able to aware they are so that they are aware of what schemes and what beneficial programs state governments, central governments, or state legal services authorities are undertaking, so that they feel empowered. Thank you very much. So this was all that we had done over there at the Prantri village. Now we begin our second session. On behalf of RALSA, we welcome Honorable Mr. Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority. Welcome, sir. Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge, Supreme Court of India. Welcome, sir. Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister and Ministry of Law and Justice. I welcome you, sir. Honorable Mr. Justice Manindra Mohan Srivastava, Chief Justice of Rajasthan High Court and Patron in Chief, RALSA. I welcome you, sir. Honorable Mr. Justice Shri Chandrasekhar, Judge, Rajasthan High Court and Executive Chairman, RSLSA. I welcome you, sir. Thank you very much for coming over here. Honorable Dr. Justice Pushpin Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairman, Rajasthan High Court Legal Services Committee. I too welcome you, sir. And sitting of the dais, we have Dr. Kirti Bharti, Resource Person and Managing Trustee of Sarthi Trust, Jodhpur. Welcome, madam. Thank you very much for being over here. We also have Shri Arijit Banerjee, IFS, Head of Forest Services, Rajasthan. Good afternoon, sir. Thank you very much for coming. And we also have Padma Shri Shamsundar Paliwal, the former Sarpanch of village Piplantri, along with the current Sarpanch, Srimati Anita Paliwal. We welcome you all over here. Thank you very much. Now, as the customary goes for our program, we'll start with the felicitation of it. May I request Shri Chanchal Mishra, Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur, to please come on the stage, on the dais, and felicitate Honorable Mr. Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Judge, Supreme Court of India, and Executive Chairman, NALSA. A beautiful plant epitomizing the sustainability of the environment. Thank you very much, sir. Now, may I request Sri Ajay Singh, Registrar, come PS to Honorable Chief Justice, to please come on the dais and do the felicitation of Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge, Supreme Court of India. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now, may I request Sri Raghavendra Kachawal, District Judge, Rajsamand, to please come and felicitate Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State, Ministry of Law and Justice. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका.
May I request, may I request Sri Hariyo Matri, Member Secretary, RALSA, to please come and felicitate Honorable Mr. Justice Manindra Mohan Srivastava, Chief Justice of Rajasthan High Court and Patron-in-Chief of RALSA. Thank you very much, sir. May I request Sri Rajendra Sharma, Director, RSLSA, to please come and felicitate Honorable Mr. Justice Sri Chandrasekhar, Judge, Rajasthan High Court and Executive Chairman, RSLSA. Thank you very much. May I request Sri Hemant Singh, Joint Secretary, RSLSA, to please come on stage and felicitate Honorable Dr. Justice Pushpen Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairman, RSLSA, Jodhpur. Thank you very much. Now, may I request Srimati Priyanka Parikh, Special Secretary, RALSA, to felicitate Dr. Kirti Bharti, our resource person seated off the dais. Thank you very much. May I request Srimati Rashmi Naval, Deputy Secretary, RALSA, to please felicitate Sri Arjit Banerjee, IFS, Head of Forest Services, Rajasthan. Thank you very much. May I request Sri Ajay Kumar, Secretary, Legal High Court Services, to please come and felicitate Padma Shri Sham Sundar Paliwal. Thank you very much. May I also request you to felicitate Mr. Mahesh Navhal from Bhilwara, who's over here, to felicitate. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks, everybody. Lordships, we have certain, from respected Bar Association of Ratsamand and from Bar Association of Nathdwara, we've got, the presidents. They want to felicitate the dais also here, over here. I will request now Mr. Ramlal Jad, President Bar Association Nathdwara, to please come and give a memento to Honorable Mr. Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman NALSA, and to Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge Supreme Court of India. May we have a big round of applause, please. May I request Sandeep Singh Rao also, President Bar Association Nathdwara, to please felicitate Mr. Honorable Mr. Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Law and Justice, and Chief Justice M.M. Srivastav, Sir, Executive Chairman RALSA and Chief Justice of Rajasthan High Court. And to Mr. Dr. Pushpen Singh Bhati also. पगड़ियाँ हमारे राज्य की, प्रांत की पहचान है।
हल्दी घाटी की माटी भी देखिए, ये माटी कितनी पावन है। Haldi Ghat is also known as Battle of Thermopylae, wherein the forces of Maharana Pratap fought against the forces of Akbar, and the battle is etched in the minds of the history of the Indians, and will remain to be there for generations to come. नाथद्वारा की पेंटिंग, ना श्री कृष्ण। हम लोग आज पेपलांतरी में थे, तो मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि कर्मयोगी होना चाहिए। टू ऑल प्रेजेंट ओवर हियर, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, गो टू एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आप दुनिया की किसी भाषा में देखें, आपको इस कर्मयोगी शब्द का, इसके समानांतर कोई शब्द नहीं मिलेगा। इट इज़ ओनली इन दिस कंट्री, इन दिस हिंदी, इन दिस लैंग्वेज व्हेन गिवन बाय कृष्ण, जिन्होंने कर्मयोगी होने की बात कही थी, यू विल नॉट फाइंड द वर्ड एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच डिग्निटरीज। So we start. I welcome once again you all to the state level conference on green justice, role of legal services institutions for green and clean environment and sustainable development. May I request Honorable Mr. Justice Sri Chandrasekhar, Judge, Rajasthan High Court and Executive Chairman Ralsa for his welcome address and introduction of the session. Honorable Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India, and the Executive Chairperson of the National Legal Services Authority, Honorable Justice Sandeep Mehtaji, Judge Supreme Court of India, Honorable Sri Arjun Ram Meghwalji, Minister of Law and Justice of India, Honorable the Chief Justice of the Rajasthan High Court, Honorable Justice M.M. Srivastava, Brother Justice Dr. Puspendra Singh, esteemed sisters and brother judges of the High Court of Rajasthan, dignitaries of the dais, learned members of the bar, judicial officers, officials of NALSA, officials of Rajasthan SALSA, participants, ladies and the gentlemen, with a sense of great responsibility and all humility at my command, I stand before this august gathering to present a welcome address in the honor of the dignitaries on the dais, off the dais, and to all present here. This is really a moment of great pride for the Rajasthan judiciary that among us today is the person who himself is spearheading the legal services movement in the country at the executive chairperson of NALSA, Honorable Justice B.R. Gavai. Ladies and gentlemen, for about 16 years before my Lord Justice Gavai adorned the chair of a judge of the Supreme Court of India, some of the greatest measures that had ever been proposed in the High Court were under the active guidance of His Lordship. It all had started with when His Lordship penned down some of the remarkable full bench judgments while sitting as a judge at Nagpur bench of the Bombay High Court. The journey has continued since then. A Google search reveals that His Lordship has authored about 700 judgments as a judge of the Supreme Court of India. The demonetization judgment, the demonetization judgment authored by Honorable Justice Gavai and Vivek Narayan Sharma held that the demonetization was proportionate to the union's stated objectives and that was implemented in a reasonable manner. In Davinder Singh, State of Punjab versus Davinder Singh,
Justice Gawai delivered a separate judgment concurring with the majority view and held that criteria for exclusion of the creamy layer from the scheduled caste and scheduled tribes for the purpose of affirmative action would be different from the criteria as applicable to the other backward classes. A great believer in the institutional and judicial discipline, his lordship pointed out in a state of Himachal Pradesh versus Yogundra Mohan Sen Gupta that no court or tribunal, or for that matter, any other authority can ignore the law stated by the Supreme Court. His lordship further observed that such obedience would also be conducive to the smooth working of the institutions, else there would be confusion in the administration of law and respect for the law would suffer. A lighthouse of the personal liberty. Justice Gawai is the beacon of light for every citizen of this country. In three directions in the matter of demolition of structures, Justice Gawai said, I quote, the sight of a bulldozer demolishing a house without due process is a chilling reminder of a lawless society where power replaces justice. Raising a crucial ethical question, his lordship observed that a virtuous father may have a misguided son, and vice versa. But then, stripping the innocent people of their homes and dignity is not just unjust, it is unconstitutional. In Digambar versus State of Maharashtra, his lordship emphasized that capital punishment should not be awarded lightly and commuted the death sentence to ensure that justice is served without unnecessary harshness. Indeed, he is our own Frank Caprio, who is considered today as the nicest judge in the United States of America. While delivering a lecture at Harvard Kennedy School on 21st March 2024, Justice Gawai said, I quote, policy changes need to be in line with the constitutional principles. The judiciary has a duty to do more than merely interpreting the law and overturning any legislation or governmental action that conflicts with the Constitution. Recently, speaking at the Kenyan Supreme Court on the topic leveraging on technology with the judiciary, his lordship flagged concerns over the integration of artificial intelligence in the judiciary. His lordship's vision is that the artificial intelligence should serve as an aid rather than a replacement for human judgment. While welcoming his lordship, I express my deep regards and gratitude to Justice Kavai. I welcome Justice Mehtaji before his lordship adorned the seat of Judge of the Supreme Court of India on 12th November 2023. He was the Chief Justice of the Guwahati High Court. The art of writing a judgment, which his lordship seems to have perfected, is reflected in the erudite exposition of law in decisions rendered by him in the Supreme Court. It was only recently that a judgment was delivered in Tutar Bhai Rajnikant Bhatt by the bench comprising of Justice Gavai and Justice Sandeep Mehtaji, drawing a line between not cooperating with the investigation and confession of the crime by an accused. I welcome you, sir. I welcome respected Sri Arjun Ram Meghwalji, a Master of Arts in Political Science, holder of a law degree and MBA from the University of Philippines. Sri Arjun Ram Meghwalji was a bureaucrat by profession, a member of the House Committee and member of more than 20 committees and parliamentary committees. Arjun Ram Meghwalji was awarded the Best Parliamentarian Award in 2013. He is a board leader and his efforts for enhancing the services and the institution of judiciary is laudable. I welcome you, sir. I welcome Honorable the Chief Justice M. M. Srivastava, a brilliant interpreter of law. Honorable the Chief Justice is known for his scholarly judgment, being an able administrator, and above all, a great human being. Honorable Chief Justice has been a constant source of inspiration for us. In the past, Honorable the Chief Justice was involved with the legal services movement, and the RSLSA has now greatly enriched by his thoughts, experience, and useful guidance. We are really grateful to you, Honorable the Chief Justice. I welcome my brother Justice
Bharti ji, his untiring effort to bring this conference to this stage requires my sincere thanks to him. I welcome my esteemed sister and brother judges of the Rajasthan High Court and appreciate their wholehearted support for this event. I welcome and thank the member secretary of NALSA, Sri S.C. Munghate ji, Director Samarendra Naik ji, Dr. Kirti Bharti ji, Mrs. and Mr. Syam Sundar Paliwal ji, our own Registrar General Chanchal Mishra ji, Ajay Singh, Chief to Honorable Chief Justice, Hariom Atri, Member Secretary RALSA, and all the office bearers of RALSA and the registry members. I also welcome Ajit Bhattacharya ji and all other dignitaries present here, the paralegal volunteers, defense counsel, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you, Honorable. Thank you very much for beautiful expressing introduction. Greatness of a leader is defined by the holistic change that she or he brings in the people and in the entire institution that she or he leads. A leader is a catalyst to the entire change in the thinking process, procedures, and in the institutional reforms. Now, who's a leader? There are so many definitions about a leader. Who's a leader? But what I personally like about is one is by a beautiful quote by Iqbal. I quote, "निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए." निगाह बुलंद is lofty vision. A leader, somebody who has a lofty vision. Sukhan Dil Nawaz, who's very good with words. He mesmerizes what he says. And Jaapur Soos is basically somebody who's a very passionate person. So these three tenets, Nigaha Buland, Sukhan Dil Nawaz, Jaapur Soos, यही है मेरे रखते सफर कारवां के लिए. Honorable Justice Manindra Mohan Srivastav, Chief Justice Rajasthan High Court and Veteran Chief Khalsa, is a rare legal luminary whose vision and passion towards speedy legal empowerment and process, social justice, institutional reforms, and justice for all has been the true north, guiding north star for the entire Rajasthan judiciary and Ralsa. Honorable, you have a way with words, and your ability to simplify complex issues is par excellence. I humbly request you and invite you, sir, for your address to all of us. A very good afternoon to all of you. Honorable Mr. Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority. Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge Supreme Court of India. My esteemed brother Justice Shri Chandrasekhar, Judge Rajasthan High Court and Executive Chairman, Rajasthan State Legal Services Authority. Honorable Shri Arjun Ramji Meghwal, Minister of State, Ministry of Law and Justice, Government of India. Brother Justice Pushpinder Singh Bhati, my esteemed brother and sister judges in the Rajasthan High Court, Shri Arjit Banerjee, IFS and Head of Forest Forces Rajasthan, Padma Shri Shyam Sundar Paliwal, former Sarpanch Gram Panchayat Pipan, Resource Person Madam Kriti Bahari, Bharti, um, Member Secretary and other officers of National Legal Services Authority who are present here, officers of the Registry of the High Court,
officers of Rajasthan State Legal Services Authority, judicial officers, office bearers, and members of the bar of Nathdwara Bar Association, paralegal volunteers, members of print and electronic media, ladies and gentlemen. Today's event, as I see in retrospect, is genesis of a decision making by the Supreme Court, a bench comprising Honorable Justice B.R. Gavai and Justice Sandeep Mehta. And that is the story how an issue which comes before court creates such a vast magnitude of sensitivity and how it changes the scenario, involves institutions, people, urban, rural, non-government organizations, members of the bar, and everyone, the not only in the fraternity, legal fraternity, but also in the administration. The bench was hearing a matter arising from Rajasthan with concerns about protection of Oran. While hearing that matter and then deriving a judgment, the mention of a place called Piplantri, which all know as today, came up. And thereafter, we were informed that there exists a place like Piplantri in India, which we less know, and the people all over the world know more than us. And that gave rise to a thought why we should not have a camp at Piplantri. That was the occasion when we all decided, guided and inspired by Justice Gavai and Justice Mehta, that we should have a event here through the Rajasthan State Legal Services Authority. And that is how we all have come here gathered to discuss about green justice. I would say that conceptually, green justice is a very, very wide concept. What we understand by green justice is something more subjective in nature. A villager finds that the perennial source of water through a river which was flowing there has dried, which has seriously affected their drinking water requirement, agricultural activities, and also forestation in that area. I think injustice is committed not only to that person who thinks, but everyone who are living there and are beneficiary of that perennial source of water which has dried. There may be industrial mining activity and it gives rise to immense pollution. People who are residing around are breathing toxic air. They would say that we are suffering injustice because we have a right to clean air. We all know the kind of adulterated food we are having these days because of the use of pesticides and the process of food processing. And startling revelations have been made by certain experts, particularly the analysis, which show that what we are eating is almost something, many items, if not more, is so poisonous that is damaging our. So, my understanding of green justice is that something which relates to our right, a fundamental right to life under Article 21, has to be understood in a very, very broad sense.
our fundamental right to have clean water, our fundamental right to have clean air, unadulterated food, all these are part of justice. We call green justice. And how we relate green justice that unless we have a green environment around, unless it is free from pollution, then justice may not be there. Now it's a very big task. We all know that the legislature played its role by enacting a number of laws which relate to protection, conservation, biological diversity protection. We had Forest Conservation and Air Pollution Act, Water Pollution Control Act, and large number of laws made and then various rules framed thereunder. One of the example is solid waste management rules. But when despite laws which were being made by our lawmakers over the year, it was felt all around that there is poor implementation of law, and that led to unparalleled and unprecedented judicial activism in India insofar as protection of environment is concerned. Several judgments in MC Mehta's case, and then followed a very important case, which is popularly known as T.N. Goda Varman's case. That was a petition which constantly monitored the protection of environment, protection of forest, protection of trees. And I distinctly remember the Honorable Supreme Court passed an order of such a impact way back on 31st of December 1996 when I was a lawyer, where they defined what is identified forest, something which perhaps before that could not be declared as forest was declared as forest under a judicial order. And that paved the way for protection of certain areas which strictly speaking were not the forest under the provisions of the Forest Act, but were then identified as forest and which led to their conservation and protection. Now, in this manner, one after the other, several judgments were delivered by the Supreme Court and also by the High Courts all over. This has brought about a major change in protection of environment and bringing about the green justice to everyone. Not only, I would not confine this green justice concept only to the human being, the animals, wildlife, everyone is affected by it. If green justice is not there, everybody's life would be affected. The protection of environment is a mandate of Section 4 of the Legal Services Authorities Act. And therefore, the legal services authorities are under a duty statutory and otherwise also constitutional and judicially mandated to bridge gap between the laws made by the parliament, judicial verdicts, and the violations to be remedied. This can be done by the legal service and is being done by firstly creating awareness. If we go to not only to the rural area, even in the urban area, people really do not know what are the laws which protect them from pollution, what are the schemes framed by the government, what are the schemes framed by various authorities which have the effect of protecting their environmental rights, rights under Article 21. So that is one area where I think that the legal services authority have a very crucial role to play. And for that, it is necessary that the legal services authority itself involves in a capacity building over a period, prepares effective schemes, and then rolls it out through awareness programs in every area, in far-flung areas, rural areas. The second part is that it needs to act in coordination with certain experts and non-government organizations. We all know
At a different point of time, while working as a executive chairman of Rajasthan Legal Services Authority, I came across various experts of different fields, and whenever I got the opportunity, I associated them, interacted with them, created a platform. We had workshops, conferences, and that's how we were able to create awareness, not only awareness, but also identify what are the problems and how they have to be solved. Where do we find solutions? It is the experts who alone can tell us what is the solution. Now, this bridging a gap between the beneficiary and the green justice system is very important. And therefore, the legal services authorities need to coordinate with the non-government organizations, experts, and then bring it before the people who are in need to some kind of action plan which can ameliorate their grievances, which can, in many cases, like pollution matters also, the legal service authority will have to find out what are the ways and means to minimize it, what are the laws. We find that despite rules having been framed for disposal of waste, there are lack of infrastructure, human resource, and treatment plans. The Legal Services Authority may play a very crucial role in bringing to the people the right place once their problem is brought to their notice. There is a National Green Tribunal which deals with all matters relating to environment. People really do not know if we go to the villages and we'll ask them they have several problems. But we'll say them how do you solve it? They would say that we don't know. This is our fate. उनको ऐसा लगता है कि हमारी यही नियति जिसमें हम रह रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं. But once they are told that we have remedy under the law before the courts, before the tribunal, then it becomes easier for us to ensure that environment is protected. And today we were all greatly inspired by what we have started calling as Piplanthri model. It's a not only what has been done, but it's a source of great inspiration for each one of us. Perhaps one does not need to have a big group to create uh, astounding results. What Mr. Paliwal has done is something beyond our imagination. I was told by Justice Mehta that his in his mission by now, he has planted with the help of his villagers as many as 40 lakh trees. Can we imagine this? How can it be done? That's the spirit. Why can't we inspire people through various programs, awareness programs? That Mr. Paliwal has done this. Let us make it a model all over the country, and that may be named as Pilgrimage model of plantation of trees all around. One important aspect I was willing to discuss, Honorable Justice Gavai, Justice Mehta, and Honorable Minister of Law and Justice also here. We have many kind of audits prevailing in the country. Why not to have a green audit? There has to be something. We can institutionalize something in the nature of green audit. Now, this green audit may be undertaken by a high-level body, which comprises of judges also, the government officials, NGOs, legal services authority. We know that whenever bridges are constructed, roads are constructed, many industrial activities take place. Then the sanction is granted, permission is granted, subject to fulfillment of certain conditions. One of them is that if you cut, say, 1,000 trees, you have to plant 10,000 trees. I came across a legislation in Maharashtra, that is urban
Protection of and Plantation of Trees Act, which requires that if you cut 100 trees, you have to plant 1,000. Now, you will find that everywhere, whenever such kind of permission is granted, these kind of conditions are implicit in it. And then you see on the papers that they had cut 1,000 trees and they have planted 1,000, 10,000 trees. But the question is, how many of those planted trees have grown up? How many of them be saved where they are only 100 or 200, 500, 1,000 or 10,000? Now, similarly, there may be other aspects like mining activities. They require certain conditions to be fulfilled. And the entire process of mining lease requires certain conditions to be fulfilled on a continuous basis, whether it's being done. So that all requires a kind of some kind of audit, green audit, whether those 1,000, 10,000 which have been planted have grown up or not. Who will do it? So I think that is one idea which I had in my mind that we may have, institutionalized something in the nature of green audit. Thank you very much for inviting me and giving me this opportunity to express my um, thoughts. Thank you very much, Honorable. Indeed, it was a pleasure listening to you. मैं आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कि आप आएँ, हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें। आप यकीन जानें, मैंने आज उनको पहली बार सुना। हम सब ने उनको सुना था वहाँ पे बिलावरी के अंदर। बहुत ही सार्थक बात थी। मैं चाहूँगा सर, आप हमें अनुग्रहित करें। ये कह रहे हैं कि मैंने सार्थक बात कही। क्या नाम है आपका? हैं? अनुराग जी। अब ये संचालन करने वाले भी यही थे वहाँ और मुझे लगता है सुनने वाले भी आधे तो होंगे मेरे ख्याल में, क्यों? हैं? 1/4 हैं? लेकिन जजेस तो दिख रहे हैं काफ़ी मुझे। हैं? यहाँ ज़्यादा है। और पार्टिसिपेंट में अभी चंद्रशेखर जी को पूछ रहा था, जज साहब को, कि पार्टिसिपेंट कुछ नए हैं, कुछ शायद बाहर के भी हैं, काफ़ी हैं। तो मुझे वही बात दोहरानी है, कुछ नया करना है अनुराग जी? नया करना है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन जस्टिस, रोल ऑफ लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस फॉर ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो है टॉपिक। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस गवई साहब और मुझे लगता है पिपलांत्री और यहाँ का आशीर्वाद, मुझे लगता है श्याम जी जल्दी मिलने वाला है ना गवई साहब को। बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता साहब, मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव जी, हमारे 2 और माननीय जज राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर जी और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी साहब। इस परिसर में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर पर कृति भारती जी, ऐसा बताया गया है। हमारे पीसीसीएफ अरिजीत बनर्जी साहब, सर हमने साथ-साथ भी काम किया है। गवई साहब को की तरफ से हमने और बनर्जी साहब ने साथ-साथ भी काम किया है। आज ये यहाँ मिले तो अच्छा लगा हमें। हैं? हाँ, तो वो हमारी थीम रही ना। ये शायद वहाँ ओएसडी थे क्या? हाँ, ओएसडी रहे, डीएस भी रहे। आपको अच्छा लगा, लेकिन आपका श्याम जी पालीवाल साहब से 25 साल पुराना रिश्ता है, ये अच्छी बात है। पेड़ों के बचाव के लिए, पेड़ों के लगाने में भी इसका मतलब वन विभाग ने भी अच्छा योगदान दिया होगा। और जब अनीता जी को हम सरपंच साहब को सम्मानित कर रहे थे,
तो मैंने आते ही याद किया श्याम जी को, मैंने कहा अनीता जी कहाँ हैं? आपका भी यहाँ स्वागत है। सभी ऑनरेबल जजेस राजस्थान हाई कोर्ट के यहाँ आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। तो हमारे एडवोकेट्स आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। नालसा, तालसा, डालसा और अब तो तालुका पे गया हैं? उसको क्या बोलते हैं? तालुका वालों को? तालसा हैं? उनके भी सबके जो न्यायिक अधिकारी आए हुए हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस के जो हमारे जजेस मिले, वो भी आए हुए हैं, उनको सबको नमस्कार, मातृशक्ति को प्रणाम। नवरात्रा भी हैं आज और जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको भी नमस्कार। बात आपने कहा कि मैंने सार्थक कही, तो मैंने तो वहाँ कबीरदास जी को याद किया था। इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए। तो अब मैंने कबीरदास जी को तो वहाँ बोल दिया। अब आपने कहा अब सार्थक कही, तो ये चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट याद आ गए कि इन्होंने कल रात को संगीत सुनाया। तो मैं अभी बैठे-बैठे हमारे गवई साहब से ये कह रहा था कि आपने संत तुकाराम जी के लिए क्या कहा था? इन्होंने मराठी में कहा, तो कुछ मुझे समझ में आया, अभी मैंने अर्थ समझा। तो इन्होंने कहा कि संत तुकाराम जी ने कहा कि पेड़-पौधे हमारे रिश्तेदार हैं और यही काम श्याम जी आपने किया। ताली बजा के स्वागत करना चाहिए इनका। पेड़ कोई लगाता है और भाई के रूप में उनको राखी बाँधते हैं। यही तो तुकाराम जी ने महाराष्ट्र में पुणे में कहा क्या सर? वो हाँ, सतारा उस एरिया में कि संत तुकाराम जी ने कहा कि पेड़-पौधे हमारे रिश्तेदार हैं और पक्षियों की जो आवाज़ आती है, वो इस संसार का संगीत है। अच्छा लगा क्या? तो कल आपने सुना ना संगीत? सुना ना? कहाँ गए इंदिरा सिंह जी कहाँ गए? हाँ, ये भैया बैठ सुना था, आपके कारण ही सुना हमने ज़्यादा। लेकिन उस संगीत में मुझे लगता है कि इनकी पृष्ठभूमि संगीत की रही होगी। उस संगीत को हमने वहाँ सुना कल होटल में, आज हमने सुना किरण के माध्यम से। किरण जो पेड़-पौधों को पानी दे रही थी, वो भौतिक रूप में तो हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो मुझे लगता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड के माध्यम से जो पेड़-पौधों को पानी दे रही थी और पानी की जो पेड़-पौधों के माध्यम से आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि किरण ही पेड़-पौधों को पानी दे रही है। आपके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। ऐसी सुंदर कार्यक्रम आज विद्वांतरी में हुआ। मैंने वहाँ ज़िक्र किया था सार्थक भाषण में अनिल जी का। मुझे किसी ने पूछा साहब वो अनिल जी हमारे समझ में नहीं आए। तो वो वन और पर्यावरण मंत्री थे, अनिल माधव दवे, उनका पूरा नाम था। वो मध्य प्रदेश से थे और वो ही पेरिस एग्रीमेंट के समय वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ बड़ा विवाद हो गया कि अगर अमेरिका ही अलग हो जाएगा, तो शायद पेरिस एग्रीमेंट नहीं होगा, प्रकृति को हम बचा नहीं पाएँगे। वहाँ पे चर्चा आई, मैं फिर याद कर रहा था सुंदरलाल बहुगुणा जी की, कि उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया कि मैं पेड़ नहीं कटने दूँगा, मैं चिपक जाऊँगा। तो मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनको बताया, वो मुझे टेलीफ़ोन पे कभी-कभी बात कर रहे थे, मुझे वो जैसे प्रकृति को रिसोर्स पर्सन कोई मान रहे हैं, तो वो मुझे मानते थे कि पर्यावरण के मामले में मैं पर्यावरण मतलब भजनों के माध्यम से मैं रिसोर्स पर्सन हूँ। तो मैंने कहा खेजड़वी को आप याद करिए। खेजड़वी सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के कारण हम जानते हैं, लेकिन हम अमृता देवी जी को भी जानें कि उन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया और महिला और पुरुषों का साथ लिया और जो भी राजा का आदेश है हम नहीं मानेंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। 363 लोग पुरुष और महिला शहीद हो गए, लेकिन खेजड़वी को नहीं कटने दिया। वो भी तो हमारे प्रेरणा है। तो उन्होंने उसको वहाँ भी बात की। अनिल माधव देवे ने उनको वहाँ भी बात याद किया और इस कारण से आज जो ये प्रोग्राम है ग्रीन जस्टिस का, तो जब हम थर्मल पावर से सोलर पावर की ओर बढ़ते हैं अनुराग जी, तो ये ग्रीन जस्टिस ये सार्थक भाषण में एक सार्थकता ये भी है। ऐसे हम कई न्यायालयों के निर्णय जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण की रक्षा की है और उन निर्णयों का जिक्र हमारे गवई साहब, संदीप मेहता साहब करेंगे। लेकिन मैं इस प्रकृति को समझता आया हूँ, क्योंकि एक शब्द न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी के मुख से भी निकला वहाँ
वो आपने शायद नोट नहीं किया, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सार्थक भाषण का अंग था, कि हम प्रकृति को भी पूजते थे। यही निकला था। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। हम प्रकृति को भी पूजते थे। तो प्रकृति के कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। ये आज की वर्कशॉप ही तो है ना, इसमें अपने को जानकारी रहनी चाहिए। एक है पृथ्वी, एक है हमारा जल, जिसका ज़िक्र श्याम जी आपने सारे रास्ते में लिख रखा है। जल है तो कल है। जल संरक्षण, जल बचाओ। एक पृथ्वी है, एक जल है, एक एयर जिसको हम बोलते हैं, और एक आकाश है। ये प्रकृति में 5 तत्व हैं और हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। प्रकृति के भी 5 तत्व ज़रूरी है। वो बैलेंस्ड अब कैसे-कैसे, कितने-कितने परसेंटेज है, ये संतों ने अलग-अलग बात कही। बहुत से लोग कहते हैं कि जल 72% है। आप अगर गूगल खोलेंगे, तो आपको 70% निकल जाएगा। मैं सतगुरु से मिला था एक दिन, मैंने सतगुरु को पूछा, मैंने कहा सर, वाटर की परसेंटेज क्या मानते हो आप कंपोज़िशन? तो उन्होंने मुझे कहा 70 टू 72%। तो मुझे लगा संतों ने बहुत अच्छा अनुभव उस ज़माने में, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, और उसी से ही ये निकल के आ रहा है कि वाटर इस संसार में 72% है। हमारी बॉडी में भी 72% वाटर है। हमें पानी का संरक्षण प्रकृति में भी करना चाहिए, बॉडी में भी करना चाहिए। और शायद किरण के डिहाइड्रेशन का विषय भी आया था, वो भी जल से जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने जल को ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया। पृथ्वी का तत्व 12% मानते हैं। उसमें पेड़ लगाओ, सुंदरता हो जाती है, पृथ्वी को ठीक रखो, प्रदूषण से मुक्त करो, प्लास्टिक कम फेंको पृथ्वी पे, तो हम पृथ्वी की भी रक्षा करेंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के शब्दों में कि लिवेबल प्लैनेट एक ही है। हम चाहे चंद्रमा पे चले जाएँ, चाहे हम अ, मंगल को खोज लें। वो उनका एपीजे अब्दुल कलाम साहब का लास्ट भाषण है शिलांग का, कि इस संसार में जो जीने लायक, जहाँ हम जी सकते हैं, जहाँ हमारी सभ्यता जिंदा रह सकती है, वो एक ही हमारा प्लेनेट है, वो है अर्थ। उसी पे भाषण था उनका। तो वो हमारा 12% है, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जल 72% है, वायु 6% है, उसको भी हमें साफ-सुथरा रखना पड़ेगा। वायु को भी प्रदूषित होने से बचाना पड़ेगा। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के भी ये पार्ट है और ग्रीन जस्टिस के भी पार्ट है। और अग्नि 4, इसलिए अग्नि हमारे जीवन में आवश्यक है। अब हम सूरज से ले लें अग्नि, चाहे हम दीपक से ले लें, और चाहे हम यज्ञ करके हवन से अग्नि ले लें। मतलब कभी-कभी अग्नि का प्रभाव कम होता है, तो आज हम जहाँ रक्षा सूत्र बाँध रहे थे, उसमें अग्नि ने थोड़ा-सा प्रभाव दिखाया कि मैं भी हूँ, प्रेज़ेंस में थी वो वहाँ। ध्यान आया आपको? आपको महसूस नहीं हुआ होगा? मुझे महसूस हुआ कि 4% अग्नि हमारे प्रकृति में भी है और हमारे जीवन में भी है। और अग्नि अग्नि को हम ढंग से अगर नहीं एक्सेप्ट करते, कुछ लोग अग्नि क्या ज़रूरत ज़रूरत है? अगर हम यंग जनरेशन को अग्नि का महत्व नहीं बताएँगे, सूरज उगते हुए को देखो, धूप में थोड़ा बैठिए, आप दीपक जलाइए, अगर करिए, अगर उनको नहीं कहेंगे, तो वो अग्नि 4% प्रकृति में है, शरीर में भी है। वो मांगेगा शरीर, तो क्या करेंगे वो? कोई बीड़ी पिएगा, कोई अमल खाएगा, क्यों? कैसी? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अग्नि तो ज़रूरत है ना उसको। क्या करना चाहिए फिर अपने को? यज्ञ की तरफ बढ़ना चाहिए, दीपक की तरफ बढ़ना चाहिए, सूरज को देखना चाहिए, सूरज में भी तप है। और आज अब नवरात्र चल रहे हैं, उसमें तप को अंदर भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे एमएम श्रीवास्तव साहब व्रत रख रहे हैं शायद, आजकल व्रत रख करके ये तप को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? प्रकृति में भी है, शरीर को भी है। और एक आकाश, इसको भी हमें साफ-सुथरा रखना पड़ेगा। ये कंपोज़िशन है, तो इस कंपोज़िशन में मैंने वहाँ कबीरदास जी को तो सुना सुना दिया बोल कर के, लेकिन मुझे वहाँ कुछ लोग मिले कि आप तो गाते भी हो ना? मैंने कहा गाता तो हूँ, लेकिन एमएम श्रीवास्तव सर के साथ तो नहीं गाता, लेकिन मैं गाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं भजन गाता हूँ। तो अब अनुराग जी, आपका सार्थक कबीरदास जी का भजन। कबीरदास जी ने कहा किसी ने कि भी पेड़ बहुत, ये दिन कहते रहे, लोग उनको पूछे कि साहब पेड़ ऐसा क्या ख़ासियत है? कि नहीं, पेड़ों जैसी बुद्धि, पेड़ों में बहुत अपने को सिखाता है पेड़, खाली हवा नहीं देता है पेड़, पेड़ हमें जीवन में कैसे हमें रहना है वो सिखाता है।
लोग माने नहीं। तो कबीर वो भजन वहाँ कबीरदास जी खुद नहीं गाते थे। उन्होंने कई दिन से सुना है उस भजन को, पहले या तो अपनी बात लोगों से कहते थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया दोहा वो कबीरदास जी का शानदार दोहा। जैसे तुकाराम जी का न्यायमूर्ति हमारे गवई साहब ने बताया, ऐसा कबीरदास जी ने कहा सरवर सरवर संत सन, चौथा वर्षण में और मारा करे कारण चारों धारी थे। खून भी माना है कबीरदास जी। उसी पे ये एक भजन है कबीरदास जी का। मैं अगर चीफ जस्टिस हमारे राजस्थान की अनुमति दे तो थोड़ा-सा गा के सुना सकता हूँ। संगीत के तो पारंगी आप ही हैं, मैं तो उतना हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं भजन तो गाता हूँ। मन रे वृक्षन की रे, ओ मन रे वृक्षन की, हे वृक्ष, हे मनुष्य, तू जैसा वृक्ष है उसकी बुद्धि दे। क्या है? काटे जिससे बैर सींचे जिससे ने, जो कोई उसको पत्थर मारे मुँह को फट दे, ओ मन रे वृक्ष की। अगर अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। यही ग्रीन। बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta is known to have delivered judgments that focus on constitutional vision of justice and judiciary's role in upholding the principles of liberty, equality, and fraternity. May I request Honorable Mr. Justice to please share his thoughts on today's theme and the session that we are having today. I request you, सभी उपस्थित गुणीजनों को गोमाष्टमी पर्व की बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ। My esteemed elder brother, Honorable Justice B.R. Gawai Sahab, Judge Supreme Court of India and Executive Chairperson, National Legal Society. Shri Arjun Ramji Meghwal Sahab, Honorable Minister of Law and Justice Department, Government of India. Shri M.M. Srivastava, Honorable Chief Justice, Rajasthan High Court and the Patron Chief of RSLSA. This is Shri Chandrasekhar, Judge, Rajasthan High Court and Executive Chairman of RSLSA. Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Judge, Rajasthan High Court and Chairperson, Rajasthan High Court Legal Services Committee. My esteemed sister and junior judges from the Rajasthan High Court. Padma Shri Shamsundarji Paliwal Sahab, former Sarpanch, Gram Panchayat, his better half, Srimati Anita ji, present Sarpanch. Shri Arjit Banerjee, IAS PCC Rajasthan. Registrar General Rajasthan High Court, officers of the NALSA, officers of NALSA, officers of Judiciary. Dr. Kriti Bharti, she is the resource person, chairperson of the NGO Sarthi Trust. She has been invited here for a very special purpose. What we have seen today at Piplantri, Beti Bachao. She has been a pioneer in preventing child marriages, a significant vice which our state suffers from. By her single-handed crusade, she has prevented 1,400 child marriages and has got 41 annulled. Big round of applause for her. Members of the Bar Associations from Rajsamand, Nathdwara, law students, distinguished ladies and gentlemen. In the grand tapestry of human civilization, we stand at a critical juncture. This juncture where our actions will determine the fate of our planet and the generations that we inherit. Today, I feel honored to speak about a concept that is just not a legal principle, but a moral imperative.
green justice, the role of legal service institutions in fostering a green and clean environment and promoting sustainable development. The ancient philosophy of Vasudev Kutumbakam, a world is one family, continues to resonate with the vision of one earth, one family, one future. Our planet, my friends, is facing unprecedented environmental challenges. Climate change, biodiversity loss, pollution, resource and environmental degradation. These are not just distant threats, they are immediate realities that impact every aspect of human life. The wisdom found in the ancient Indian texts such as Upanishads, Rig Veda, Atharveda, Charak Samhita consistently emphasized the importance of environmental protection and conservation in a society. They establish a philosophical foundation for environmental protection that resonates with the world and through the Indian Constitution and the legal framework. Article 41, 48A of the Indian Constitution explicitly directs the state to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife. Alas, the state forgot this when the incident of Hyderabad took place, which Honorable Justice Roy nipped in the bud. A big round of applause to him. Complementing this, Article 51AG makes it a fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for creatures. The right to clean environment has been interpreted as a part of right to life under Article 20. The Indian judiciary, as everyone knows, has been instrumental in developing the environmental jurisprudence. We have all heard the phrase golden opportunity. Today I will be coining a new phrase, green opportunity. Friends, blessed was the day when I was given the green opportunity while hearing the application relating to the preservation of orans in the state of Rajasthan, while sitting with my esteemed elder brother, Honorable Justice Gawai, in TN Godavarman's case. After the hearing was over, in his own unimitable style, his large-hearted approach, and his great degree of affection for me, he told me, "संदीप भाई राजस्थान का मामला है, आप ऑर्डर लिखवाइएगा." That judgment, that issue which was raised in the application related to the orams are sacred groves which have been silent witnesses to rich ecological and cultural tapestry of Pakistan. You will be surprised to know that our country, everywhere there are equivalent such sacred groves by different names, from north to east and north to south and east to west. These are not mere patches of Greenland, but living repositories of biodiversity, traditional ecological knowledge, and community wisdom. The court, as everyone knows, directed the state government to comprehensively map, identify, and formally notify the occurrence to be deemed forests or community reserves, as the case may be. This recognition transcends legal boundaries and touches the very soul of our environmental heritage. The significance of this judgment cannot be overstated. Local communities have faced relentless struggles to protect these sacred ecological spaces for decades. We just heard Honorable Law Minister Saab referring to Khejarli. We have extensively referred to Khejarli's sacrifice in the judgment. Therefore, the ruling in the Oran's case is more than a legal directive. It is an acknowledgement of the indigenous community's role as a primary guardian of our ecological system. By mandating the formal recognition of owners, the judiciary has reinforced a critical principle of green justice that the environmental protection is intrinsically linked to cultural preservation. I'd like to share with this August gathering, Honorable Gawai Sahab and Dewar Sahab, that we had another opportunity
to preserve a very small but a very significant reserve forest area in the western Rajasthan. You will be surprised to know that eastern Rajasthan has got 28 reserve forests, whereas western Rajasthan has got only two. And one of those was this small patch of 7 square kilometers, which houses 4,000 black bucks by the name Tal Chhapan. The state government was intending to reduce the eco-sensitive zone. We took up the matter suo moto with the active participation of two young bright lawyers who are now adorning the bench. This is Sandeep Shah and Sunil Beni, who were the additional advocate generals at that point of time. We managed to give a direction not only to protect that forest, but to add a significant part of land from the adjoining Nagaur district for increasing the forest area. The necessity was felt because that 7 square kilometers was proving totally inadequate for the number of black bucks. They were dying because of conflict. And the present result, I am told now, after 2 years of direction being given, monitored by Justice Party also, the black bucks have started migrating to the new forest area and the population is rising. This is the impact of judicial intervention in imparting justice. The Kenyan environment activist Wangari Maathai said, "The generation that destroys the environment is not the generation that pays the price. That is the problem." Distinguished audience, while we discuss the legal frameworks and the judicial interventions, we must confront the stark reality of environmental degradation that surrounds us. Attempt made Recent attempt made in Hyderabad with the painful picture of the bulldozers uprooting trees and the peacocks and the deer running for their lives is a painful reminder of that. Let me share some deeply concerning data that underscores the urgency of our mission. A recent report submitted by the Union Environment Ministry to the NGT reveals a disturbing picture of forest encroachments across our nation. According to this comprehensive report, more than 13,000 square kilometers of forest area has been encroached upon in 25 states. This is not simply a trivial statistic. It represents vital ecological spaces lost to unauthorized human activities. More troublingly, several states, unfortunately Rajasthan, have not even provided the required information for this assessment. This silence speaks volumes about the challenges we face in environmental governance and transparency. Rebecca Solnit, a writer and activist, said, and I quote, "Our ancestors viewed the earth as a rich and vibrant being, as something beyond a mere commodity. We view it as a dead or as an inert object." The scale of this encroachment is staggering. Out of total forest area of 7,50,648 hectares, encroachments have been identified across multiple states, with the Madhya Pradesh recording the highest loss. As of January 2024, Madhya Pradesh alone reported approximately 5,460 square kilometers of enclosed forest land. Maharashtra follows with 575 square kilometers, Assam 575 square kilometers, and Orissa with 264 square kilometers. These figures are not mere numbers. They represent critical biodiversity hotspots, carbon sink, water catchment areas, and habitats for countless species. Each square kilometer lost represents an irreversible damage to our ecological heritage and a direct threat to our sustainability. Anthropologist Jane Goodall said, and I quote, "What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make." Unquote. What is the role of the legal service institutions in green justice? Friends, as we saw in the morning by the camp which we held in the village, legal service institutions play a crucial role in creating environmental awareness,
pivotal guardians of environmental justice, serving as critical bridges between legal frameworks and environmental protection. Legal awareness and empowerment form the cornerstone of the institution's environmental mission. By conducting extensive educational programs, workshops, and community outreach initiatives, legal services transform the public understanding of the environmental rights. The Rajasthan State Legal Services Authority has played a pivotal role in implementing the Rajasthan High Court directive to ban plastic products, recognizing their harmful impact on health and environment. Despite these regulations, plastic usage remained a growing concern, leading to pollution and ecological damage. In response, RALSA took the decisive step to eliminate single-use plastics such as bottles, carry bags, cups, and straws from court premises and official events. The authority ensured strict compliance with these measures across all legal institutions, setting an example of environmental responsibility. The future of humanity and indeed all life on earth now depends on us. It's our choice what kind of earth, what kind of environment we leave behind for the generations to come. Green justice is not just a destination but a continuous journey. It demands unwavering commitment, collective action, and transformative thinking, as we saw live in the village Planthri. As guardians of legal process, we have a profound responsibility to protect our environment, uphold ecological rights, and ensure a sustainable future. Rajendra Singh, the famous water conservationist, waterman of India, said, if you take care of rivers, the rivers will take care of you. Let us embrace this responsibility with courage, creativity, and compassion. Let us transform legal institutions from mere dispute resolution mechanisms to catalysts of environmental regeneration and sustainable development. Once again, I express my heartfelt gratitude to Honorable Justice Gavai Sahib to have given us this opportunity to showcase the remarkable work being done in the village Piplantri, which was graced by His Lordship's kind presence in the morning. Unless but for his grace and affinity and affection, probably I would not have got the chance to address you all on this important subject. Even though his schedule is very hectic, but instantly, once the judgment was pronounced, he said, we have to go Piplantri, irrespective of how busy my schedule is. Our grateful thanks to you, sir, from the core of the heart. In the end, I would like to quote the former American President Barack Obama, beautifully captured the essence of dire need for environmental protection. We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Our actions today will echo throughout the generations. Let those echoes be of hope, resilience, and harmony. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Honorable. Thank you very much. Now we come to the second part of the session where we'll have releases and presentations. May I request the Honorable dignitaries to release TALSA's action plan for the year 2025. Thank you very much, sir. May I also request for releasing the calendar for ALSA for the upcoming year that outlines the current year-long activities and the execution.
Thank you very much, dignitaries. Thank you very much. Starting from the year 2022 till date, under the leadership of Honorable Chief Justice of Rajasthan, these 3 years have been a watershed moment for Lalsa. Throughout these years, many programs and conferences aim towards legal empowerment, legal awareness, social justice, legal aids, implementation of POCSO Act 2012, and many are being held. Many initiatives like video legal aid clinics to convicts, Lok Adalat, pro bono lawyers, paralegal volunteers, e-Pathshala, telelaw, mobile application Nyaya Sathi that aim towards providing the legal services to the mobile phones, and many such initiatives were launched. Legal aid and games for specially able children, UDAN, were also one of the few highlights of those years. These initiatives have helped also to connect with masses and at the institutional level, Lalsa got its new magnificent building, Seva Sadan, that has state-of-the-art technology. Also launched Nairo Sati, one full-page paper publication. We are now in the year 2025, and must I say the rigor, the zeal, to carry forward the vision of Honorable Justice of Rajasthan has grown multifold in the minds of Lalsa of his beginners. With the hope of reaching and touching the life of the last man standing so that he is able to live with honor, Khalsa is geared up to hold many landmark activities this year. The book, Empowering Justice, Khalsa's Journey of Legal Aid and Reforms, gets another chapter added up. May I request the dais to be open, please? Thank you very much, dignitaries and honorables. We now come to the release of Nalsa's two books, landmark books. One is Asha, which defines as awareness, support, and help in action, SOP towards eliminating the girl-child marriage 2025. This book is released in English as well as Hindi. And also the second book, Nari Ki Udan, a beautiful book by pictorial book by Nalsa, which describes the life and struggles of Indian women, wherein it says that the beautiful line, which is the vision of Honorable Justice B.R. Gavai, संविधान से मिली पहचान, आत्म गौरव और आत्मसम्मान, मैंने चुनी शिक्षा, मेरा भविष्य होगा प्रकाशमान, समानता, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भर, अवसर, अधिकार, आजादी। किताब इस बातों को इंगित करती है, जिसका नाम है नारी की उड़ान। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा पहले बोल गया था, अब हम उड़ान नारी की उड़ान का भी विमोचन करेंगे। May I please get the book on the dais?
Thank you very much, sir. Thank you very much, dignitaries and honorables. Now we come to the release of a comprehensive digest of recent environmental law, which is the need of the hour. यही हमारा थीम भी है, and this is the need of the hour, as I say. किताब बहुत महत्वपूर्ण है, किताब बहुत ज़रूरी है. It outlines the major verdicts, judgments delivered by honorables. Thank you very much, honorables. Thank you very much, dignitaries. Moving ahead, we have now presentation on green initiatives by Padma Shri Shyam Sundar Paliwal ji, former सरपंच ग्राम पंचायत विक्रांत जी. आज इनके बारे में इतना कुछ कहा गया है, इसकी इतना कुछ किया गया है. प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से. भारत माता की जय। मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा हूँ और कैसे ये हुआ है, मेरे लिए तो कोई अदृश्य शक्तियाँ ही काम कर रही है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। और ये सब काम तो हमारी संस्कृति में और हमारे माता-पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। मैं छोटा था, तो मेरे दादी जी जब हम लकड़ी देते थे चूल्हे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आम की लकड़ी है, इसको नहीं जलाना है। मेरी बहन ने कहा कि मेरे ससुराल में पीपल की लकड़ी नहीं जलाते, पीपल को नहीं काटते। मेरे भाभी सवेरे 5 बजे उठकर एक गाँव का तालाब था, उसमें से मिट्टी उठाकर उसकी सफाई करने जाती थी और उसका त्योहार मनाते थे, समुद्र दोहन के नाम से, कि नहीं, जल स्रोत साफ करने का काम हमारे पुरखे करते आए हैं और आज भी वो कर रहे हैं। वही सीखें मेरे पिताजी के नाम, पिताजी जो पौधे लगाते थे, लोग कहते थे कि भंवर लाल जी पौधे लगाते हैं और कभी सूखता नहीं है। वो ऐसा खड्डा खोदते थे, खड्डे में सूखे पत्ते डालते, ग्वार पाउडर डालते, पत्थरों की उसकी फेंसिंग करते और फिर उसमें केले का पौधा लगाते थे और फिर उसमें बरगद पीपल लगाते। केला पूरी बारिश का पानी पीता और बारिश के पानी के बाद जब पौधे को ज़रूरत होती तो केले में से पानी पीकर वो बरगद पीपल बड़े होते थे। गाँव में पानी पिलाने वाली जो महिलाएँ होती थी, पेड़ों में बैठती थी, उनको कहते थे, "दूध का महीने का दूँगा, तेरे मटके में शाम के समय बचता है, वो इस पीपल के नीचे से डालेगी।" इस तरह से गाँव में पेड़ लगा, वो हमने सीखा है। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे गाँव के लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय गवई साहब, मेहता साहब, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश और माननीय अर्जुन लाल जी मेघवाल जैसी हस्तियाँ मेरे गाँव में सिर्फ इसलिए पधारी है कि मेरे गाँव के लोगों ने एक बड़ी तपस्या की है। और मैंने तो सिर्फ ये माना है कि मेरा गाँव मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं जब गाँव का सरपंच बना, तो गाँव के लोगों से हमने एक वादा किया था और कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊँगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊँगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस गाँव में चमत्कार करें और उसी तर्ज पे चलकर हमने सरकार की किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनसहभागिता से जोड़कर उस
गाँव में जो पानी 900 फीट था, आज ज़मीनी स्तर पर बहता है। आज लाखों-लाखों टन पेड़ तो हुए ही हैं, पर चंदन के पौधे पेड़ बन रहे हैं, आम के पौधे पेड़ बन रहे हैं और हर व्यक्ति का उससे जुड़ाव है। गाँव की बेटियाँ बड़े गर्व से कहती हैं, ये पौधा मेरे जन्मदिन पर मेरे माता-पिता ने लगाया था और मुझे भी जन्म मेरे माता-पिता ने दिया, इस नाते ये पेड़ मेरा। इस तरह से परिवार के लोगों को परिवार से जोड़कर उन पारिवारिक को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा आपसे मंच से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में समय ठीक नहीं है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर इस तरह का कोई नियम बनाए, कानून बनाए, सरपंच बनना है, तो फिर आपको गोचर भूमि बचानी पड़ेगी। और उस गोचर में आपको आपकी पंचायत की जनसंख्या अगर 5,000 है, हर साल 5,000 पौधे आपको सरकार की योजनाओं से गोचर में लगाने ही है। जैसे ये कानून बना कि आपको सरपंच बनना है तो घर में टॉयलेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज पूरे देश में हर घर में टॉयलेट बन गए, माहौल बन गया है। तो प्रकृति को बचाना है तो नियम कानून बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये प्रकृति बच पाएगी, गोचर बच पाएगी और ये प्रेरणा पता नहीं कैसे आती है। मेरी बेटी की डेथ हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी बेटी की स्मृति में पेड़ लगाऊँगा और जब पेड़ लगाना शुरू किया, देखा तो गाँव की बेटियों के नाम पर पेड़ लगाएँगे, आ रही है। की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको उनके लिए पैसा भी इकट्ठा करेंगे, सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनको आत्मनिर्भर करेंगे, गोचर भूमि को आत्मनिर्भर करेंगे, वन्य जीवों को बचाएँगे और इस तरह के आंदोलन करके तो हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं। और इसी आंदोलन की वजह से आज मेरे जैसे एक व्यक्ति 8वीं तक पढ़ा हुआ हो, उसको पद्मश्री जैसा सम्मान मिलता है। मैंने तो कभी किसी को पत्र भी नहीं लिखा। मैंने तो कभी किसी को पत्र भी नहीं लिखा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। पर आप काम करते जाइए, देने वाले आपकी विचारधारा को समझकर आपके पास आ जाएँगे, ये भाई खड़ा हो। 10वीं 50 साल की उम्र में मैंने 10वीं किया, 12वीं किया, कॉलेज किया और मुझे टेक्निकल ने दो। तो इस तरह के काम करके हम प्रकृति को आगे बढ़ाएँ। मैं क्या बोलूँ, आप बहुत बड़े विद्वान हैं और मेरे जैसे कुछ व्यक्ति को मेरे गाँव में आपने पता लगा आशीर्वाद दिया। पूरे जीवन मैं ही नहीं, इस प्रकृति के लिए काम करने वाले जितने भी देश में पर्यावरण पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और उस प्रकृति को बचाने में हम मेरे जैसे कई कार्यकर्ता आगे आएँगे। ये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड एवं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एडवोकेट डॉक्टर कृति भारती मासूमों को रूढ़िवादी तथा बाल प्रथा, बाल विवाह की बेड़ियों से कानून की मुक्ति दिला और उनकी ज़िंदगी में खोई हुई मुस्कान ला रही हैं। आपको हौसले की उड़न परी और मुक्तिदाता छोरी के नाम से भी जाना जाता है। आप वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट और बीबीसी के द्वारा जारी की गई 100 प्रेरणादायक मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन की सूची में भी शामिल किया हुआ है। डॉक्टर कृति भारती ने अनूठी साहसिक मुहिम पे चलकर 2012 में देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया था। आप शायद इस बात को महसूस कर रहे होंगे, कितनी बड़ी बात होती है कि पहला बाल विवाह 2012 में निरस्त हुआ है। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। उसके अलावा अब तक उन्होंने 2100 से अधिक विवाह। मैं निमंत्रण दूँगा आपको डॉक्टर कीर्ति भारती कि आप पधारें और आप अपने प्रेज़ेंटेशन से, अपने विचारों से हमें अवगत। खम्मा घनीसा। मैं भारत की बेटी डॉक्टर कृति भारती आप सभी को नमन, आप सभी को वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले सम्मानित मंच, हमारे बीच आज हमारे चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी.आर. गवई सर हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर मेहता सर हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लॉ एंड जस्टिस मंत्री महोदय श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल सर, गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे राजस्थान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव
और जब मैं बात कर रही हूँ राल प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हमारे बीच इस समय मौजूद हैं हमारे राल चेयरमैन मिस्टर चंद्रशेखर सर और हम सभी जिनसे कई बार प्रेरणा भी ले चुके हैं हमारे जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी सर। आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कृति भारती है। सबसे पहले मैं नालसा और रालसा का ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आज आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है। यकीन मानिए आज मैं यहाँ पर खुद नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ पर उन बच्चियों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जो बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद हुई हैं। तो सबसे पहले ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई सर और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता सर, आपका आभार कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, तब आपको राजस्थान में हमारी किलकारियाँ जो हम बचाने की कोशिश करते हैं, वो सुनाई दे रही है। अम, मुझे न जैसे कि अभी आप सुन चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड अचीवमेंट्स भी मिल चुके हैं। देश का पहला बाल विवाह निरस्त मैंने 2012 में करवाया था, जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किया गया। मुझे जनरली बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे उपलब्धियाँ मुझे मिल चुकी हैं, जिसमें से एक उपलब्धि जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वो ये है कि एक आम धारणा बन चुकी है कि जो कोर्ट जाएगा, उसको चप्पल घिस जाएँगी। 2015 में हमने इस धारणा को बदलने की कोशिश की और 3 दिन के जुडिशियल प्रोसेस में फैमिली कोर्ट जोधपुर से हमने 3 दिन में 2 जोड़ों का बाल विवाह निरस्त करवाया। इसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था और दर्ज ही नहीं हुआ, उसके बाद 2016 में मुझे और पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने उसके लिए ऑनर भी किया और शायद अभी मेरे व्हाट्सएप डीपी भी वही है, मैं अभी तक उसको चेंज नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो अभी भी स्वर्णिम मोमेंट है सिर्फ ऑनर होने के लिए नहीं, हम बदलाव हैं, हम ये स्थापित कर रहे हैं कि जो जस्टिस सिस्टम में जाएगा, उसका और किसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उसको जस्टिस ही मिलेगा। अम, जब मैं बाल विवाह की बात करती हूँ, तो मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि आप और भी मुद्दों पे काम कर चुकी हैं, तो ऐसा क्या है जो इतना फ़ोकस आप बाल विवाह पे कर रही हैं? तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ आप जानते भी हैं कि बाल विवाह एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ सारे दूसरे मुद्दे एसोसिएटेड हैं। बाल विवाह पीड़ित होगा, वो चाइल्ड लेबर का भी पीड़ित होगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस शिकार होगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, चाइल्ड वुमेन ट्रैफिकिंग देखने को मिलेगी, हेल्थ डिप्राइव्ड होगी, एजुकेशन डिप्राइव्ड होगी, यानी हम जो बाल अधिकारों की बात करते हैं, उन सभी का हनन हम एक बाल विवाह पीड़ित बच्चे के साथ होते हुए देख सकते हैं। लेकिन मैं अब इसको और दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगी। मैं जब बाल विवाह को देखती हूँ, तो मुझे एक बीमारी दिखती है। कोरोना जैसी एक जानलेवा बीमारी है और जिस तरह हमने कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, कोरोना से हमने लड़ाई प्रिकॉशंस के साथ-साथ प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ रेमेडियल अप्रोच अपनाई, वैसे ही मुझे लगता है कि बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। जब प्रिवेंटिव अप्रोच की बात करती हूँ तो न्यायपालिका से लेकर प्रशासन इवन एनजीओज़ भी बाल विवाह रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा सिर्फ कोशिश ही नहीं जिस तरह आज एसओपी रिलीज़ हुई है अवेयरनेस के कई तरह के तरीके अपनाए गए हैं जिससे आम जन तक सूचना पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि बाल विवाह अपराध है। लेकिन जब मैं क्यूरेटिव अप्रोच की बात करती हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास अभी भी कम हैं। जब कोरोना आया तब हमने प्रिवेंटिव अप्रोच के तहत मास्क लगाए, सैनिटाइज़र्स यूज़ किए, 2 गज की दूरी रखी। प्रिवेंटिव अप्रोच जब बाल विवाह में देखती हूँ, तो हम बाल विवाह रोकथाम की भी बात करते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आई कोरोना की, तब तक हमारे अंदर चल रहा था वैक्सीन कब आएगी। तो जब मैं बाल विवाह की बीमारी को देखती हूँ, तो मुझे बाल विवाह की एकमात्र वैक्सीन
दिखती है बाल विवाह शून्यकरण। बाल विवाह शून्यकरण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे को बेटियों से हम मुक्ति दिलाकर उनको एक नई उड़ान जो जो हम अभी बुक की रिलीज़ देख चुके हैं, एक नई ज़िंदगी, नई उड़ान दे सकते हैं। जब मैं बाल विवाह शून्यकरण की बात करती हूँ, तो मेरे चेहरे पे एक अलग-सी स्माइल आ जाती है। आप यकीन मानिए स्माइल मेरी नहीं है, मैं वो स्माइल महसूस कर पा रही हूँ, जिन बच्चियों को मैंने बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ादी दिलवाई है। तो वो महसूस करने के बाद जो मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, ये वो बच्चियों की स्माइल है, जो बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद हुई और आज उनकी ज़िंदगी एक सिर्फ़ सक्सेसफुल ही नहीं, उनकी ज़िंदगी नई उड़ान भर रही है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को जब मैं देखती हूँ, तो उसमें स्ट्रेंथ भी मुझे बहुत दिखाई देते हैं। जैसे अगर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के 3 आधारभूत स्तंभ हैं, जो रोकथाम कर रहा है बाल विवाह की, उन बच्चों को सुरक्षा दे रहा है, जो बच्चे बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हैं और साथ में उन अपराधियों को सज़ा देने की बात करता है, जो किसी रूप में बाल विवाह में भले ही सम्मिलित भी हुए हैं, उनको भी सज़ा देने की बात करता है। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यहाँ पर सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, जो मैंने फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, फील्ड चैलेंजेस हैं। तो जब मैं प्रिवेंटिव अप्रोच के तहत बाल विवाह रुकवाने जाती हूँ, तो सबसे पहली समस्या मुझे ये आती है कि हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो जाती है और इस आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होने के कारण वो और दूसरी किसी बाल विवाह की सूचना नहीं दे पाते। अब हमें ये देखना है कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किए बगैर उन्हें सुरक्षा देते हुए कैसे बाल विवाह को रोक। मान लीजिए इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दे भी दी, तो फिर भी कई बार ऐसा होता है फिल्मी सीन की तरह कि प्रशासन समय पे नहीं पहुँच पाता और उस बच्चे का बाल विवाह हो जाता है। हम यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन का खेल खेलने लग जाते हैं। एक चौकी से दूसरी चौकी, एक थाने से दूसरे थाने उस इन्फॉर्मर को घुमाते रहते हैं कि ये मेरा इलाका नहीं है, ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और उसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मर की इच्छा शक्ति तो खत्म होती ही है, लेकिन इस बीच इस पूरे घूमने के चक्कर में उस बच्चे का बाल विवाह हो जाता है। यानी कि हमने अभी तक इमरजेंसी का चश्मा नहीं पहना, हमने ये नहीं देख रहे कि जो बच्चे का बाल विवाह हो रहा है उसको इसी वक़्त हमारे एक्शन की ज़रूरत है, इसी वक़्त वो बाल विवाह रुकवाने की ज़रूरत है। फिर मान लीजिए प्रशासन हम बहुत अच्छी फ़िल्म देख रहे हैं, प्रशासन समय पे पहुँच भी गया, तो और रुकवा भी दिया और वापस आ गया। उसके बाद वही समाज, वही परिवार के लोग उस बच्चे का बाल विवाह कर देते हैं। समय, प्लेस और कई बार गाँव दूसरे गाँव ले जाके टाइम प्लेस चेंज करके। ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई फ़ॉलो अप एक्शन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि अभी तो बाल विवाह रुक गया, प्रशासन जिस बच्चे का बाल विवाह आंकड़े में दिखा रहा है कि हमने रोक दिया। मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या सच में रुका है? आपने 18 और 21 तक क्या वापस उसको जाकर देखा है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है? उसके बाद जब ये तो प्रिवेंटिव अप्रोचेस की बात हुई, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये भी आ जाती है कि जो बाल विवाह करने वाले हैं, वो आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ना तो फ़ोन अलाउड होता है, ना कैमरा पर्सन अलाउड होते हैं, जहाँ बाल विवाह हो रहे होते हैं और दोनों साइड से बहुत कम लोग रात को खेतों में ले जाके बाल विवाह कर देते हैं। हमें बहुत समस्या आती है उस समय जब हमें कोर्ट में ये प्रोड्यूस करना पड़ता है कि बाल विवाह हुआ है, उसका एविडेंस कहाँ से लाएँ और उस मोमेंट पे जब टेस्टिमनी के लिए लोगों को कहते हैं, तो उसमें भी लोगों को डर होता है कि हमको जाति बाहर कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह के चैलेंजेस प्रिवेंशन्स में हमको देखने को मिलते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ जब मैं बात कर रही हूँ बाल विवाह निरस्तीकरण की, जब मैं किसी बच्ची को कोर्ट में ले जाती हूँ बाल विवाह शून्यकरण के लिए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि अभी तक शून्यकरण के लिए कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस जारी नहीं हुए। तो सामने वाला पक्ष ये कोशिश करता है, हैरेसमेंट की कोशिश करता है कि जो केस है उसको डिवोर्स की तरह डील किया जाए। तो यहाँ और भी समस्याएँ हमको देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि
निचले स्तर पे जो जुडिशरी के जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे लॉ की नॉलेज ही नहीं, ये भी इसकी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है कि बच्चा किस तरह से कोर्ट पहुँचता है, अपने समाज से, अपने परिवार का खिलाफत करके, जाति पंचों की खिलाफत करके, जाति दंड भोग के कोर्ट पहुँच रहा है। तीसरी बात, जब मैं पीनल प्रोविजंस पे आती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस बात से पूरा इत्तेफ़ाक करती हूँ कि भय बिना प्रीत नहीं। लेकिन जब मैं जनगणना के आंकड़े देखती हूँ, तो वहाँ पे गर्भवती माताओं के हज़ारों हज़ारों की संख्या में मुझे नंबर दिखते हैं। गर्भवती माताओं के बच्चों की बहुत सारी संख्या में नंबर मिलते हैं। लेकिन उसी समय जब मैं एनसीआरबी का डेटा देखती हूँ, तो 100 नंबर्स में भी हमारे बाल विवाह के केस दर्ज नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर बाल विवाह को सिर्फ़ कुप्रथा न समझें, बाल विवाह को एक अपराध की तरह, अपराध के नज़रिए से भी देखें, क्योंकि पीसीएमए ने तो हमें संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध बना रखा है इसको, लेकिन हम इसको अभी तक में नहीं ला पाए। इसके अलावा पीसीए में बहुत सारी दूसरे लॉज़ के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में है। समस्याएँ, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियाँ बाल विवाह से मुक्त हों, ना तो उनका बाल विवाह हो और ना ही वो बाल विवाह के दंश को आगे तक सहन करें। अब बाद में आज जो हमारी एसओपी जारी हुई है, उसके बारे में कहूँगी। अ, मुझे लगता है जो आज आशा सहयोगियों के लिए एसओपी जारी हुई है, ये एक आशा की किरण है। बाल विवाह का जो अंधकार है, बाल विवाह का जो अंधेरा है, उसको दूर ये आशा की जो एसओपी है ये करेगी। मैं इस बात से बहुत फ़ैसिनेटेड हूँ कि जब उच्चतम न्यायालय निम्न स्तर पर जा रहा है, उन कर्मचारियों को एक तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है जो जिनका सीधे आमजन से कॉन्टैक्ट है। तो वहाँ मुझे मेरी उम्मीद और बढ़ रही है कि ये बाल विवाह का अधिकार ज़रूर खत्म होगा। समय की सीमा है, मेरे पास 2 बार स्लिप आ चुकी है, अदरवाइज़ आप यकीन मानिए सर, मैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट बिना सोए, बिना खाए-पिए बोल सकती हूँ। अपनी बात को एक सवाल के साथ विराम देना चाहूँगी। 1929 में से हम बात कर रहे हैं कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब क्या हमें 2047 तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद हों, या फिर क्रांति आज और अभी उठेगी? मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगी, हम सभी का यही ध्येय होना चाहिए कि बाल विवाह और बाल विवाह पीड़ित सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों में दिखाई दें और हम सब कहें, वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ चाइल्ड मैरेज। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए ढेर सारा आभार एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया कृति भारती जी, बस थोड़ा समय की हमारे पास अभाव था। नाउ मे आई रिक्वेस्ट Arjit Banerjee, IFS Head of Rajasthan to please come and share his presentation on green environment protection and sustainability. Thank you, Anurag ji. Mr. Justice, Honorable Shri B.R. Gawai Sahab, Judge of the Supreme Court of India and Executive Chairman of National Legal Services Authority, Honorable Justice Shri Sandeep Mehta of the Supreme Court of India, Param Sammaniya Law Minister Sahab Arjun Ram Mehta, Chief Justice Rajasthan High Court Srivastav Sahab, Justice Chandrasekhar ji, Dr. Pushpender Singh Bhati, Honorable Judge of the Rajasthan High Court, Honorable Judges of the Court present in this room today, Paliwal ji, Dr. Kirti, ladies and gentlemen, to be even given a chance to speak for such
audience is actually very humbling. So I'm that quintessential bureaucrat who was supposed to be occasionally seen and we have tried for 35 years. I've tried. The first time I personally saw a court was in Kota. It was a labor court. In those days, most of my colleagues, peers, tried to take dates. They didn't really want to appear before the courts because we used to lose most of the cases. Personally, to me, it was an affront on my sense of balance. If I had been issued a summons, and I did go to the court. Like, the judge was an elderly gentleman who appreciated that I was present. It was nothing. It was just verification of his signature. That's all that. But then he asked me to meet him in his chambers and told me, just asked me where I was from and stuff like that. He told me that you're a young person and when you go, please try to maintain this habit, try to inculcate this habit in your establishment. So I say this with all humility. In my establishment, we're not perfect, but we try to obey directions of the government, of the court, not just in letter, but also in spirit. There are times we fail, not because of an effort. There are various circumstances. But our effort shall always be to obey. Most often than not, so why do cases reach? Because I did something which I was not supposed to do. I did something, I didn't do something which I was supposed to do. These are the two cases where the court at any level has to intervene. I used to be an instructor in the Eastern Forest Rangers College, a small village called Karsa, 40 kilometers down. February of 1997, I received in my DAC the first judgment sent from there of the Godavarman Thulurpad versus the Union of India. लाइट चली जाती थी किश्तियों में mountainous area. It took me 3 readings to really understand what it was about. I still remember, and unabashedly, I'm a fan of the incredible erudition, quality of research, the historical annotations beautifully done, and every following judgment in that matter has been. I've been a very good student of sciences. I've been a very good student of forestry. I changed how I approach my profession when I read that judgment. Justice Mehta ने अभी जिक्र किया about ताल छापड़. I am to report to officially in this matter. There was a proposal to reduce the eco-sensitive zone. Yes. The court, the double AG Saab Sandeep Shahji, uh, uh, working with security, Mr. Mehrotra and Punia ji. Both of them, अपने age हो. He was a CCF when I joined. Punia ji भी is going old in the years. They needed help. Sometimes there are situations where you cannot be directly in charge of things, but you can always help. The data, the mapping. I have visited culture than anybody else. I know every square inch of that. But till last month, despite opposition, capture मर जाएगा black buck paper में घर में so we have shifted 20 black bucks, including 2 family groups of 7 each, to just 40 grasslands. It was, I have observed the ecological succession of migratory birds in that grassland. Nagpur Jilla has no tourism site except this. This year, sir, आपका directions में लील की भी करूंगा इस साल. कोशिश करेंगे फतेहपुरा तक. We will do it. There are in the space of conservation, in the space of environmental justice. It's not just justice. It's not just trees. It's also about energy security, food security, livelihood security. While talking about the Great Indian Bustard, Supreme Court
was so kind to divide the responsibility that while conservation of the bustard is paramount, undeniable, the energy security of this country and those requirements are just as important. So there shall be balances that will have to be struck. We will have to arrive at a consensus. No, all power lines will not go underground. Yes, there will be bustards. And I am so look at the bustard breeding program. We today have a lot of healthy chicks, 50 odd healthy chicks. It's the time we look for alternative habitats. We have to look at the original bustard range. Outside the desert, there were bustards. There were bustards in Chap as late as 2014. There were bustards in Sursan when I was working in Kota. We have to look for those habitats. I assure you, the bustards will not vanish, not on my watch. There are competing demands. When I joined service, sir, there used to be 1,800 tigers. Today, when the Prime Minister says we have 400 tigers, so something has gone right. Every person, directly or indirectly involved in the field of conservation, could be a patwari somewhere, a collector somewhere, and certainly the courts who are the courts. जब न्यू ग्रासलैंड डेवलपमेंट करने का डायरेक्शन मिलता है, जब ब्लैक बक का ऑल्टरनेट डायरेक्शन मिलता है, तो मजा आता है काम करने को मिलता है. इट्स इंटेलेक्चुअल चैलेंज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज अ गुड नाइट स्लीप. नेक्स्ट टाइम सर हाई कोर्ट में जाएंगे जोधपुर, खुशी खुशी जाएंगे सर. प्रधानमंत्री जी ने पिछला जून में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में कहते कि सब कोई पौधा लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम. वी आर इंडियंस, वी नीड पॉइंट्स ऑफ मोटिवेशन. भगवान का नाम लेके नींद से उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं. हाँ, मैं स्कूल जाता था, एग्जाम देने जाता था, माँ कहती थी दुर्गा जी. हाँ, बंगाली तो माँ कहती. एक पेड़ माँ के नाम is just आप नारा कह लीजिए, रैलिंग पॉइंट. 3 करोड़ का टारगेट दिया था. सर वी हैव रिकॉर्ड, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ 5.81 करोड़ एक पेड़ ना के नाम. डेटा लोडेड बाय नॉट ओनली बाय अस, बाय सिटीजंस पाकिस्तान ऑन द पॉपुलराइज दैट मैसेज. सीएम साहब बोले पौधा लगाइए, कितने लगा पाएंगे? 10 नहीं हो पाएगा सर, 7. 7.21 वी मैनेज टू डू इट दिस ईयर. सर 10 करेंगे इस साल. I have seen young magistrates planting trees, those trees in various places all over the senior advocates at law. डबल एजी साहब खुद पौधा लगाए हैं सर इस बरसात में. अगले साल भी लगवाऊंगा उनसे. बिल्कुल अब लगाना पड़ेगा. एंड वी विल लुक आफ्टर दोज प्लांट्स. मरेंगे, दैट्स नेचर. I would like to assure this audience and I would like to assure the panel, sir, our intentions are right. We shall keep working. कभी कभार गलतियां होगी सर, ये भी मैं पहले ही कह रहा हूँ. But I know, sir, Union Law Minister साहब बैठे हैं, that my government has my back. कोई डर तो है नहीं. And I know fantastic judicial system has. Thank you very much. Thank you, Shri Arjit Banerjee. Thank you for keeping it short. May I request Mr. Justice Bhushan Krishna to please come on the stage and address all of us over here. मेरे साथी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदरणीय संदीप मेहता जी, भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर विधि न्याय मंत्री आदरणीय मेघवाल जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्रीवास्तव जी, न्यायाधीश चंद्रशेखर जी, न्यायाधीश सिंह भाटी जी,
तथा सामने उपस्थित मेरे सम्माननीय न्यायमूर्ति भाइयों और उपस्थित राजस्थान के हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट फोर्सेस श्री अरिजीत बैनर्जी जी, डॉक्टर कीर्ति भारती जी, पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर माता जी तथा पिपलांत्री की सरपंच अनीता पालीवाल जी, राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार्स, हमारे नालसा के साथी, सेक्रेटरी नालसा तथा अन्य जुडिशियल ऑफिसर्स जो विविध डिस्ट्रिक्ट से यहाँ उपस्थित है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रतिनिधि, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्रतिनिधि, पैरालीगल वॉलंटियर्स और भाई और बहन, आप सबको मेरा समागनी। आज इस अवसर पर उपस्थित रहने का मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैंने भी प्रिपेयर्ड स्पीच है मगर मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, तो आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। वैसे तो हम यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिवरात्रि का दर्शन करना था। यानी उसके साथ में श्रीवास्तव साहब के सामने एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजित किया, तो बोलते थे तो दूध के साथ में वो हमारे मराठी में बोलते बोलते उसके ऊपर की क्रीम भी मिलके दूध वालो, तो ऐसा ही दुगना आनंद हमें मिल रहा है। जब हमने वरुण वरुण की केस सुन रहे थे और उसी के साथ में जब संदीप भाई ने जजमेंट लिखा और जजमेंट पढ़ने को मुझे दिया, तो मुझे पिपलांत्री के बारे में पहली बार मालूम हुआ। वैसे तो पर्यावरण के संरक्षण में कि मेघवाल जी ने बताया कि राजस्थान की भूमिका पहले से भी आपको सबको मालूम है कि राजा को अपना महल बनाने के लिए हिजड़े के पेड़ चाहिए थे, मगर उसको बचाने के लिए सीता देवी ने और उसके गाँव वालों ने अपनी सबकी जान दी, तो एक भी ढूँढने नहीं दिया। उसके बावजूद उसके बाद राजा को अपनी हार माननी पड़ी। हार मानने के बाद में पेड़ सब बच गए। तो राजस्थान को पार्श्वभूमि है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, और उस जो मूवमेंट है उसको श्याम पालीवाल जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, वो के लिए एक इंस्पिरेशनल भाव है, प्रेरणादायी भाव है। और जब मैंने जजमेंट में पढ़ा पिंपलांत्री के बारे में, मेरे ख्याल से करीब-करीब 3 साढ़े 3 महीने हो गए जजमेंट से पहले, तो तभी मैंने संदीप भाई को बोला कि हमने को पिंपलांत्री जाना है, सिर्फ देखने के लिए जाना है। और वो बोले कि वैसे ज़रूर जाएँगे, और वहाँ जाएँगे तो जो एनवायरमेंटल का मैसेज है, उसको पूरे देश में हम बड़े पैमाने के ऊपर उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और उस उद्देश्य से हम क्या है, जैसा कि सुधर जी ने बताया कि उनके लिए उनका गाँव ही एक तीर्थ स्थल है। तो मैं जैसा मैंने सुबह भी कहा और अभी भी कहा कहता हूँ कि हमारे सबके लिए पिंपलांत्री एक तीर्थ स्थल है कि जहाँ प्रेरणा लेके पर्यावरण का जो मैसेज है, वो हम सिर्फ पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में फैला सकते हैं। एक कहावत है, मुझे श्याम सुंदर जी को देख के एक कहानी याद आई। एक जंगल में आग लग जाती है, एक छोटा-सा पंखी छोटा-सा पैरेट पैरेट रहता है या चिमनी रहती है कुछ, वो बाहर से अपने मुँह में पानी लेके वहाँ फेंकती रहती है। उसको पूछते हैं लोग, "फिर वहाँ जाके तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे अकेले से क्या होगा?" मैं आँख बंद करके
देख नहीं सकती। मैं मेरी तरफ से जाग बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे को कितना यश मिलेगा वो बात अलग है। ये श्याम सुंदर जी का उदाहरण है कि एक आदमी अगर संकल्प ले तो क्या कर सकता है। यानी उससे सबने हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। छोटी-छोटी बातें हैं जिससे हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सके। जैसे कि अभी मैं जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का जब चेयरमैन था, तो हमने डिसीजन लिया कि जब भी कोई भी नई कोर्ट बिल्डिंग का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी होगा, भूमि पूजन होगा, उस समय वहाँ कम से कम भूमि पूजन के साथ 100 पेड़ लगाएँगे। यानी जब तक बिल्डिंग तैयार होगी तो बिल्डिंग के साथ-साथ पेड़ भी बढ़ते जाते हैं। जो वहाँ पे लिटिगेंट्स आएँगे, उनको पेड़ की छाया मिलेगी। उस तरह से हम अगर चाहें सब मिलके कि छोटी-छोटी चीज़ें भी करेंगे, तो एनवायरनमेंट बचाने के लिए जो आज हम क्लाइमेट चेंज का वर्ल्ड में एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको फाइट करने में एक बड़ी मदद होगी। आज जैसे आपने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, ग्रीन जस्टिस रोल एंड लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन फॉर ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंसेस से इस विषय में जागृति होगी। जन जागृति होने के बाद में ये लोगों तक ये एनवायरनमेंट का महत्व समझेगा और जैसा-जैसा कि लोगों को, बच्चों को एनवायरनमेंट का महत्व तो खुद होके वो आगे आएँगे और एनवायरनमेंट बचाने की कोशिश करेंगे। 1-2 साल के पहले मेघवाल जी और हम चंडीगढ़ में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। आज जैसे कि बनर्जी साहब ने बताया कि इस देश में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो रहा है, इस देश में जो जंगल बच रहे हैं, उसका काफ़ी श्रेय इंडियन जुडिशरी को जाता है। आज देखते हैं कि सीरीज़ ऑफ एमसी मेहता जजमेंट्स के जो ऑर्डर्स हुए, उसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल करने में काफ़ी मदद हुई। देहरादून के जंगलों में इल्लीगल माइनिंग हो रही थी। एमसी मेहता के डायरेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट की ने कमिटी अपॉइंट की। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस उदय ललित जी उस समय वकील थे, सीनियर एडवोकेट थे, उनको एमिकस क्यूरी बनाया गया। उनकी रिपोर्ट के ऊपर वो जो देहरादून के आजू-बाजू में लाइमस्टोन की इल्लीगल माइनिंग्स हो रही थी, उसको किया गया। कनेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एमसी मेहता सीरीज ऑफ जजमेंट पे राइट टू पोटेबल वाटर, right to clean environment have been held to be fundamental rights. The court has linked them with Article 21, which says that right to live does not mean right to only exist. But right to live means right to live with dignity and right to have health, right to have healthy environment, right to have pollution-free environment are all matters which will make life worth living. आज देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हमारा आज दिल्ली में कि अभी भी one of the most polluted cities in the world. But once upon a time, वहाँ के जो डीजल बसेस चलती थी वहाँ पे, आपको याद होगा 15-20 साल पहले जब दिल्ली में जाते थे, तो द एंटायर एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी ब्लैकिश। आप एयर कंडीशन टैक्सियाँ वगैरह नहीं थी, बाद में आई और एयरपोर्ट से होटल तक जाते-जाते आपका अगर सफेद शर्ट है, तो कम से कम ग्रे कलर का तो हो ही जाता था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से ऑल दोज़ pollution making vehicles have been banned. Only CNG run buses are permitted to be applied. अभी जो polluting industries थी दिल्ली के सिटी के अंदर थी, उनको डायरेक्शन देके सुप्रीम कोर्ट ने बाहर बाहर हटवाया। And all these matters have helped the environment of Delhi be at least cleaner than what was there earlier about 2 decades back. आज
हम देखते हैं कि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट में. डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर अ नेशन. Without development, we cannot meet the aspirations of the future generation. And therefore, what has been projected by the Supreme Court over a number of years is concept of sustainable development. Development, one can't stop. Development has to be such that it will not deplete the resources, all the resources, and keep future generations without any natural resources. As in, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि all of us hold the natural resources in trust for the next generation, for the future generation. And therefore, while while ensuring the development, we must also ensure that the resources are not totally depleted so that the next generations would be without any natural resources. And therefore, a balance has to be struck between a development on one hand and the environmental protection on the other hand. जो आज अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर एक किताब नालसा ने पब्लिश की है. When I was in Nagpur in 2017, one of such issues arose. The national highway between Nagpur to Jabalpur was in the worst shape and it was caused almost more than 100 deaths due to the accidents. And I was the administrative judge there, so we took suo motu cognizance. And the issues were quite complicated. The forest department was not willing to give permission for felling the trees. The WIL was also not permitting the national highway to be constructed. We requested the Ministry of Environment, the Ministry of National Highways, and the Chief Minister of Maharashtra to sit together. And we appointed an experts committee, and ultimately we could find out a solution which balance between the development and the environment. The national highway was proposed in such a way that wherever the the study was undertaken by the experts, और जहाँ जहाँ पे रोड से animals they used to travel from one part of the jungle to the other, we directed that the large underpasses measuring about a kilometer, one was 1.2 kilometers, about 10 or 500 meters or so. And we also directed that the width and the height of the should be such that the wild animals should feel that they are part of the same jungle and when they cross from one side of the road beneath the underpasses, they will have a feeling that they are going to the same jungle. And I'm happy to say that after that judgment and after the success of Nagpur Jabalpur highway, we also for barricading whenever there was a possibility of the animals coming on the road. And now that is accepted as a role model throughout the country. And whenever the national highways pass through wildlife sanctuaries or national highways, that concept is followed as a role model. And therefore, we have to work out the ways and means to see to it that while protecting environment, the development will also not be staggered. We had a case before us pertaining to the Chardham Yatra road. The national highways were being widened so that we will have free access up to the borders of the country. The earlier benches had state order, but while court finally decided, the name of the road was not important. What was important was that the country, for maintaining its security or making it secure, needed to have a wide road so that
wherever in the need of hour of need, the armed forces can reach the borders of the country, and accordingly, that was also clear. Human greed is limitless, and we have seen what human greed leads to. We have, for the last 2 years, more than 2 years, I have been preparing for the Green Bench, the TN Godavarna, and meeting with my different colleagues, including Sandeep Bhai. We had an occasion to deal with various issues, and at times we found greed of human beings so ugly that they don't either bother for environment or bother for the animal. The statement which was delivered by me about a couple of months back with regard to, I think Mr. Banerjee must have read it, with regard to the Corbett Reserve National, Corbett Tiger Reserve CTR. The vast stretches of trees were cut only to construct guest houses and quarters. And when we took the cognizance, a show was made that it was not a resources, but it was for the protection of the forest and all. The CEC appointed by the Supreme Court examined everything, and we had to hold in that case that the then honorable minister who was found all in that, and the DFO was subsequently also arrested in an ED matter. The ministers or the officers, or for that matter, the judges, we hold the office of public trust. We are required to use our offices for the welfare of the public, not for the depletion of environmental resources, not for the depletion of the flora and fauna of this country. So I must congratulate Mr. Mungate and Mr. Nimbalkar and the other team of the NALSA for coming out with the digest from the important judgments of the Supreme Court, which will highlight as to what steps are being taken by the Supreme Court so as to protect the environment, so as to ensure that the development is sustainable, development does not get in conflict with the environment, but there's a balance between the development as well as the protection of the environment. Various concepts have been evolved by the Supreme Court, like the polluter pays principle, to be pollution karega, like MC Mehta's case, we have seen the NGT has been imposing heavy penalties on the industries which are carrying out, which are as a result of the existence of these industries, the, there's a pollution, maybe a water pollution, maybe a air pollution. The enactments have been enacted by the central government, Wildlife Protection Act, the Indian Forest Act, the Forest Conservation Act, and so on. So under Section 2 of the Forest Conservation Act, no forest land can be permitted to be used for non-forest purposes unless the Wildlife Board of India, which is chaired by none else than the Prime Minister of India. And therefore, we must also have a precautionary principle. The first should be avoid any damage to the environment. But if it is impossible and the development is necessary for the development, for the progress of the nation, then the compensatory measures have to be done. Like the Honorable Justice made a reference to enactment in Maharashtra that for felling one tree, a compensatory trees have to be planted, and not only planted, they have to be seen to it that they survive, that they grow. And therefore,
We also, when we grant any permission for felling of the trees, direct that the trees shall be planted in proportion of 1 to 10. If one tree is uprooted, 10 trees would be planted, and also that the body for which the tree felling is done is bound to ensure that the trees not only survive, they grow, they are required to take care of planted trees for a number of years. And therefore, now you will see that wherever new national highways are coming up, you will see that at the time of construction of the national highways itself, on both the sides, as well as middle, the trees are planted. The contractors are taking care to see to it that the trees grow and survive. The Supreme Court as well as the various high courts in the country have done remarkable work in various PILs in pertaining to environmental protection as well as the prevention of pollution. As a reference was made by the earlier speaker to our duties under Article 15(1)(a), it is our duty to protect the environment. It is our duty to protect our flora and fauna. Therefore, every citizen is bound to ensure that the environment is protected, environment is sustained. And I'm happy to note that nowadays there is a very increasing awareness amongst the younger generations about the incident which Mehta told you about Hyderabad. I read it in the newspapers yesterday morning and immediately took so much cognizance. At 10:30, we requested the Registrar of the Telangana High Court to visit and submit his report. A very devastating picture came. But when I read today's newspaper, one happy picture, because I did not notice the earlier news. One happy picture was that about 1,000 students from the university were trying to protect that forest. And this is a very happy understanding on the part of the younger generation. But in spite of their resistance, the JCBs and the bulldozers were put in. Fortunately, out of 400 acres, at least are in position to save about 300 acres, three-fourths of the forest. The role of legal services authority plays an important role. As all of us know that the NALSA as well as the state legal services authorities, the district legal services authorities, the legal service authorities are trying out to reach to the nooks and corners of the country. We have been traveling to Manipur, Arunachal Pradesh, Ladakh, various parts of the country, and trying to reach to the common people to ensure that the justice is also for them. As I reported in the morning, Dr. Ambedkar said that unless there is a social and economic justice beneath a political justice, the political justice is of no avail. He had warned on 25th of November 1949 in his last speech to the Constituent Assembly while presenting, while replying to the final draft. He said that unless and until we remove these social and economic inequalities, he said that on one hand, we are promising social, economic, and political justice to our citizens. Insofar as political justice is concerned, we have ensured it by the principle of one value. But what about social and economic justice? On a social plane, we have a society demarcated into 4 compartments, wherein entry from one compartment to another compartment is prohibited. On an economic plane, we have the entire wealth of the country concentrated in few hands, and the vast majority of the citizens spending it difficult to meet two injustice. And therefore, we want that unless and until we remove these inequalities, the edifice of democracy which we have so laboriously built would fall
like a house of cards. And therefore, in the last 75 years of the Constitution, we are celebrating Amrut Mahotsav. The Parliament of the country, the legislatures of the state have enacted various laws to ensure that the promise of social and economic justice in the Constitution is carried out in reality. The Supreme Court as well as the High Courts have always upheld such laws and such measures which are taken in order to bring social and economic justice in the country. And also and other PLSAs and Taluka legal, they try to reach out to the citizens so that they are aware about their rights. Unless they are aware about their rights, the, there is no use of having rights, because unless he knows that he has a right, he will not be in a position to exercise his rights. Therefore, the state legal services authorities, the district legal services authorities, they can reach out to the students. I was happy to see the message on the road by the RSLSA when we were traveling to Piplantri. They go to the schools, and the importance of protection of the environment is imbibed in the minds of children from their early age. They will certainly be the protectors of environment, as we have seen 2-3 days back in Hyderabad. In various parts, we see that wherever these are to be failed, the citizens are vigilant. They try to protect the environment. Today, I must also congratulate the Rajasthan State Legal Services Authority, the leadership of Honorable Chief Justice Srivastava and Justice Chandrasekhar ji, the executive chairman of the RSLSA, for coming out with the booklet LSA की कानूनी सहायता. It depicts the entire of the Rajasthan State Legal Services Authority over the years. I congratulate the MSs by the Rajasthan State Legal Services Authorities, the citizens of India, the citizens of Rajasthan, to ensure that the message of legal services authority reaches the citizens, the last citizen of the country. I'm sure that this book will go a long way in bringing out reforms as well as providing the legal assistance to the needy, the last citizens of this country. Congratulate Chairman of Executive Chairman as well as the member secretary, Mr. Atri, for coming out with this wonderful publication. I must also congratulate my colleagues from NALSA, Gate and Mr. Nimbalkar, for coming with the NALSA Asha awareness and action towards eliminating child marriage 2025, and I already referred to the verdicts and the Nari ki Udan Bandishon se Azadi tak. They have put in their hard work, they and the other members of the team, and come out with wonderful publication. Specifically, the Nari ki Udan Bandishon se Azad is it's a beautiful book depicting a picturesque stories so that even the villagers understand them in a simpler manner. At this moment, I must place on record my appreciation for the efforts taken by Dr. Kriti Bharti. She has a wonderful presentation on how she has been successful in preventing thousands of child marriages and also getting some of the child marriages annulled. I'm sure that her journey will also be an inspirational one
to all. And Dr. Ambedkar always used to say, "Women in the country are the most downtrodden." It was Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule who had to pioneer the education for the woman. In those days, women were not even permitted to take education. But Mahatma Phule and Savitribai Phule fought against the system and started first school for women in Pune. They had to go through tremendous troubles. जब सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी स्कूल जाने के लिए, तो लोग उनके गोबर फेंकते थे। तो एक दिन वो शाम को रोते-रोते आई और वो बोली कि मैं ये काम नहीं कर सकती। महात्मा फुले ने उनको बोला कि आप एक काम करते जाओ, बोले स्कूल जाते समय एक और एप्पल साड़ी आपकी थैली में लेते जाओ, जाके वो गोबर वाली साड़ी पहनाओ, दूसरी साड़ी पहनो, बच्चों को पढ़ाओ, फिर वापस घर आते समय फिर गोबर वाली साड़ी। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने नारियों की शिक्षा के लिए इस देश में बड़ा काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आई विल मेजर विथ प्रोग्रेस ऑफ द वुमन इन सोसाइटी। तो समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की, उस के आधारित इस समाज की प्रगति निर्धारित है। आज हमें खुशी की बात है कि हमारे साथ आज हमारे 3 साथिया हाईकोर्ट जज उपस्थित है। लास्ट ईयर में यहाँ जुडिशियल अकेडमी में गया था, तो उस बैच की 70% स्टूडेंट्स ये नारियाँ थी। आज वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस कार्य में मोदी जी को सबका साथ मिलेगा, इसकी मुझे पूरी I have no hesitation. The Rajasthan State Legal Services Authority, I'm sure, will provide her all the necessity. इस समय कार्यक्रम से हम करीब-करीब सवा घंटा आगे चल रहे हैं। तो और ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा मैं फिर से राजस्थान स्टेट लीगल अथॉरिटी ने जो कार्य किया है, कार्य की सराहना करना चाहूँगा, उसका अभिनंदन करना चाहूँगा। यहाँ हमें तो सुंदर जी से प्रेरणा मिली है, वो मैसेज आपका निश्चित रूप से पूरे देश में आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो आपने जो काम किया है, उसको हम राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिससे आज एक श्याम सुंदर जी है, आज एक हमारे पोपटराव पवार है महाराष्ट्र से, हज़ारों ऐसे होंगे, हज़ारों गाँव में आज हमने विकलांग का हरा-भरा और वहाँ जो जल लग रहा था, देखा वैसा एनवायरमेंट पूरे देश में मिलेगी। कीर्ति जी का भी वो भी हम पूरे देश में चाइल्ड मैरेजेस को कैसा करना जाए इसके ये नालसा और स्टेट लीगल अथॉरिटीज की तरफ से कोशिश करेंगे। मैं इस समय फिर से राजस्थान के मुख्य न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी तथा चंद्रशेखर जी, हमारे मित्र भाटी जी, राजस्थान हाईकोर्ट के बाकी सब न्यायाधीश, मेंबर सेक्रेटरी अत्री जी, रजिस्ट्रार जनरल जी की तरह जिस जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, उस जिले के प्रधान न्यायाधीश श्री राघवेंद्र अचवाल जी, उन्होंने आज मैं देख रहा हूँ कल कल आप शाम को आए, कल शाम से पूरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ के ऑफिसर्स दिन-रात जुड़े हुए हैं। ये दोनों कार्यक्रम सक्सेसफुल हो इसके लिए उन सब जुडिशियल ऑफिसर्स का, राजपाल जी के सब साथियों का, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सब अफसरों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दोनों कार्यक्रमों को इतनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल किया। उनके प्रयासों के बिना ये असंभव था। उनका सबका आभार मानता हूँ। आप सबको से शुभकामनाएँ देता हूँ और एक ये पूरा विश्वास है, यहाँ से हम जब निकलेंगे तो बेटी बचाओ और पेट बचाओ, ये संदेश
पूरे देश में फैलाने का संकल्प लेके ही बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। Thank you, Honorable. Thank you very much for this address. We come to the presentation of 7 years. मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन RSLSA आप सोविनियर प्रस्तुत करें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण राज। पछवाई पेंटिंग जो राजस्थान की मशहूर है। बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर दिनेश मेहता आप ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सोविनियर प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनीत कुमार माथुर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग कि आप पधारें और आप माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आप ये सोविनियर बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस इंद्रजीत सिंह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अविनीश झिंगन सर आप पधारे हैं आप ऑनरेबल मिस्टर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव सर को सोविनियर प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद सर आपका। नाउ एज अ टोकन ऑफ सोविनियर वी प्रेजेंट बुक and we present by Shri Ajay Kumar, Secretary RHC LHC. आप बता रहे हैं आप ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री चंद्रशेखर जज राजस्थान सोविनियर प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच सर। आई विल रिक्वेस्ट श्री अजीज खान साहब सेक्रेटरी RHC LHC जोधपुर आप पधारे हैं आप डॉक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ऑनरेबल जज राजस्थान हाई कोर्ट एंड चेयरमैन RHC LHC जोधपुर को आप ये सोविनियर के तौर पे पुस्तक प्रस्तुत करें। आई विल आल्सो रिक्वेस्ट ऑफ द डाइस आपका आप सभी हमारे जुडिशरी ऑफिसर्स अधिकारियों के लिए आप आपके लिए एज अ सोविनियर प्रस्तुत है। जी, 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 ठीक। मैं अब आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जज राजस्थान हाई कोर्ट एंड चेयरमैन RHC LHC जोधपुर फॉर हिज वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज। My Lord, Bhushan Ram Krishna, Gavai sir, senior most judge of the Supreme Court of India. My Lords, Sandeep Mehta sir, Judge Supreme Court of India. Minister, Law and Legal Affairs, Government of India, Meghwal sir.
our own captain, Honorable Chief Justice Maninder Srivastava sir, the man behind the whole effort today, our senior judge, Honorable Justice Chandrasekhar Saab, who, as Executive Chairman of RSLSA, has worked day and night to make this program successful. Paliwal Sahab, former and now, Benati Sahab, my brothers, my sisters, my constitutional sister, my dear RSLSA members, all the other fellow members, ladies and gentlemen. Correct. That was a term coined in Haryana. When जब मैं यहाँ आया तो मैं एक हरियाली से एक हरा धन्यवाद प्रस्ताव देना चाह रहा था, लेकिन सारे दिन में जितनी प्रेरणा मिली तो मेरा जो धन्यवाद प्रस्ताव है थोड़ा हरे के अलावा हो गया है। मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर चल करके आप सब पधारे हैं, जजेस, मेंबर्स, जगह-जगह से आप लोग आए, आप लोगों ने इस दिन का इंतज़ार किया। कोई भी इनिशिएटिव, चाहे वो ग्रीन इनिशिएटिव हो, चाहे ग्रीन जस्टिस करता है कि उसको उसके पीछे क्या भावना है जिससे हम इसके लिए आज मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्या भावना है, इस पे डिपेंड करता है। इसमें कहानी भी याद आई। आज जब सुबह ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो माननीय गवाई साहब ने कहा एक बहुत सहज शब्दों में कि मैं यहाँ देवनागरी में भाषण देने नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्रा के रूप में आया हूँ। मुझे अत्यंत खुशी हुई, इमीडिएटली पूरे प्रोग्राम का कलर चेंज हो गया, जब वहाँ के आम जनता ने महसूस किया कि कितने बड़े व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जा रहे हैं, वो यहाँ गाँव में ये कहने के लिए आए कि मैं आया, मुझे सदगुरु की वो कहानी याद आई, जब एक न्याय के मंदिर का या एक तीन मंदिर का जब हो रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, तो वहाँ 3 मजदूर बैठे हुए थे। तो पहले वाले से पूछा गया कि आप जो है वो इस मंदिर आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि पत्थरों से माथा मार रहा हूँ। मंदिर बना रहा हूँ लेकिन पत्थरों से माथा मार रहा हूँ। दूसरे वाले से पूछा गया कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जो है वो मेरे पेट रोजी-रोटी से मेरा पेट भरने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरे वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक भव्य मंदिर का आज वो वर्ड तीर्थ यात्रा है, वो इस रालसा और नालसा की सारी एक भव्य मंदिर जो आज अष्टमी, सप्तमी, नवरात्रों के शुभ टाइम में आज पूरी वैदिक समाज के द्वारा बनाया गया और देश को अर्पित किया गया है। मैं सबके लिए आज माननीय मंच को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि जिस जज़्बे के साथ आज आप सबने अपनी-अपनी बात रखी, जिस सहजता के साथ आज आपने आम नागरिक से कनेक्ट किया, वो अपने आप में अद्भुत और सुंदर है। I am extremely delighted to see that the books which we have written full of Article 21, full of greenery, full of livelihood, full of green justice, today have been brought to the ground. Today have been brought to the place where it was really required to be brought. Today it has become not only a station, but it has also become a stepping stone for fraternity. We as a fraternity today have realized that if we keep on taking strong under the aegis leadership of our leaders, then we are sure to succeed one day. I'm extremely delighted to see that the manner in which Roy Saab connected with the people of Dignitary and also the Fed are present here, the simplified manner in which the communication was made, it is absolutely unique, and it is absolutely full of a very high spirit. The law minister took us through many social, deep-rooted and beliefs and many things, good examples which set the tone for the whole seminar, the whole visit, the whole activity of the State Legal Service Authority, National Legal Service Authority, and I'm sure that his connect with the people at the ground level, even as the law minister of India, certainly take the Legal Service Authority to the very normal. I am extremely the repeatedly today since morning the judgment of Honorable Justice Gavai Sahab and Sandeep Mehta Sahab in the case of the Uran has been talked about. I will not again repeat it. I will just share a small stroke from that judgment which will just clarify the whole spirit of that judgment. The shlok is Prakrit Purusham Chaivam Tattva Yadi Bhavata
Tavkarnish cha gunishvech twadhi prakrit sampan. Nature is the source. Honorable Mehta Sahab uh, has brought us from the verse and chapter of Bhagavad Gita, and the meaning is nature is the source of beautiful meaning. Please note, nature is the source of all material things. The maker, the means of making, and the things made. Spirit is the source of all consciousness, which feels the pleasure and pain. These are the beautiful words which summarize that judgment of Oran. We all know as people, as citizens of Rajasthan, that it is a valuable and a very valuable asset to a common man, to a common villager, to a common place, to a common peasant, to a common person, agriculturist. So that is the importance which has to be given. Many of the judgments, like the judgment of Corbusser City, where the Honorable Justice Gavai Sahab has ordered environment impact assessment for the expansion of town, is an example how the urbanization has been dealt with while limiting the green. The uh, carried out various directions, including recognizing the right to free from adverse effects of climate change as a fundamental right. One of the quotes, my favorite quotes from the judgments of Honorable Justice B.R. Gavai Sahab is on environmental justice. The right to live has been interpreted as a right to an environment pollution free. The right to potable and clean water and so on. The right to clean air has also been recognized as one of the fundamental rights. So these are the wonderful things which are happening, which need to be brought to the citizen of India so that he can be rest assured that how we are connected to them, how the luminaries of our profession, the luminaries of our democracy, the luminaries of our constitution, how they have, in a easier mode, in a very simplistic mode, have brought it to the doorstep of the rural environment. I will fail in my duty if I do not thank my own captain, our own Chief Justice, Anil Shastha, because he has been relentlessly telling us that Nalsa is one place we can work to give the best to the citizen and reach out to the last chord. Justice Chandrasekhar sir has been seeing very tough and very difficult times because of his mother's sad demise. But I tell you, we have seen him day and night for last 15 days working for this program. Day and night he has been planning the details to the core. He has taken it to the root. He has taken every single detail of this program to make all of us, including me, because absolutely no contribution in that. Of course, he has, but many of because he is the guardian judge of Rasaman. So all of us, I mean, we are thankful to Chandrasekhar sir and Kuldeep ji for giving us this extremely excellent event. It has really worked to the core where we wanted to in the shape of this prestigious body of legal service. I also wish to thank all my brothers and sisters, the dignitaries present, Parivals, Bharti, Dr. Saab, and Banerjee Saab, everybody who's present here. We are extremely thankful for all of us. All these books, my chest swells with pride because all this while I was just going through something from all these books, it was a matter of pride. It was a matter of pride because the system for which I work, the system for which all of us work, the spirit with which the spirit with which we have dedicated all these things, common citizen. It is a thankful day for each one of us, for all the luminaries. It is a thankful day. We have really done a great job, and I am sure all of us, with our captains, with the luminaries, we will continue to work and take strides and strides away in the excellent organization of judiciary, law fraternity, and legal service to make an impact on the commons. Thank you, Jain. But before part, today आज जब मैं सुबह पिपलांतरी पहुंचा, लास्ट की एक लाइन और बोल, तो दो चिड़िया आपस में बात कर रही थी। एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से पूछा, कौन पधारे हैं आज? इतनी गाड़ी, 200 गाड़ियां कौन आ गए आज? गवाई साहब के लिए उन्होंने पूछा। तो दूसरी चिड़िया ने जवाब दिया, हियर इज द लॉयन किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ द वाइल्ड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हम इस सत्र और इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं और इसके पहले हम यहाँ से विदा लें। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि राष्ट्रीय गान के सम्मान में अपने स्थान पे खड़े होकर के राष्ट्रीय गीत गाएँ।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Captain has instructed me to add one more line. Along with Chandrasekhar sir, his team, the secretary, member secretary Hariom Atri Sahab, director RSLA Rajendra Sharma Sahab, joint secretary Hemant Wagela Sahab, special secretary Dr. Priyanka Parekh Sahab, secretary Ajay Kumar Sahab, deputy secretaries Rashmi Rawalji, Pradeep Ji, Savitri Singh, Madam, and Aziz Khan Sahab, joint secretary RSLA, have done a great job. Applause for them. Thank you, Kachwal Sahab. Thank you so much. The whole team, the whole judiciary. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, honorables. Thank you, dignitaries, for coming, and thank you, everybody. Thank you very much. Please take care.